Just put a control V in the chat box. Kumari Sikha, it is right. Yogita M, it is wrong. Kushal, it is right. Sadar Adityan MD, it is right. Perfect. Anupama K, it is right. Perfect. Romana Praveen, it is right. MVG Sirisha, it is wrong. Okay. Now, what I'll tell you, you can first create the queues. After that, you can enhance the count to 10 or 15 through prompting. It is also easily possible. After that, उसको publish करना है. Publish करने के बाद, you have to give some name and all. So after that, you can see that queue's name in your dashboard. See, once you publish, automatically that queues will be available in your dashboard. Okay. Now, once it is available, you can just click on that. There will be an option called Start Now. You can click on Start Now. After clicking on Start Now, you can just choose whether it is teacher-led or student-led, whatever it is. After that, you will move on to the next screen. Continue kar do. After that, you will get a screen with some code, 6-digit number. वो 6-digit नंबर का कोड जो स्क्रीन है उसके नीचे शेयर वाया का ऑप्शन है. देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड शेयर वाया गूगल क्लासरूम, शेयर वाया लिंक. द फर्स्ट वन इज लिंक. क्लिक दैट, come to the chat box here, message box, and put control V. So this is the option. Now see, if the students or the people are not दो if the स्टार्ट students नाउ are के बाद दो ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट लेड एंड टीचर लेड. स्टूडेंट लेड और आप चूज कर दो, आप जो चाहिए वो चूज कर दो. Now if what I am telling, now you are running it. For example, yeah, same thing, start. Now the link is share via, you can see share via barcode के नीचे, not start, barcode के नीचे there is an option. Yeah, that is the link. Now you can control V in the chat box. Now just come to the chat box and control V. Fine. Now what is the option? Now sometimes what happens, sometimes teacher and students will not be connected through the same application. For example, now we are connected through Google Zoom. So in that case, you want to invite teacher from outside, students from outside. So कैसे invite करना है? Just ask students to Google join my queues. क्या करना है? Google join my queues. When they Google join my queues, they will ask for a code. Now the code which is shown in your screen, you can share. Okay, when they Google join my queues, the next option is game ID, game code. गेम कोड तो आपका स्क्रीन पे होगा, वो गेम कोड आपको शेयर कर सकता है, so that they will get connected to your game, your screen. This is a mode by which you can connect people from outside. So I think it is very clear now. When you conduct the queues, all the data, everything can be taken, that you can check later on. यदि आप क्लास में क्यूज कर रहा है तो अभी we have done with 127 people, it can be done with 200 people. So at that time you can just check in whether it is working perfectly, जो data मिल रहा है या नहीं, all details मिल रहा है या नहीं. All these details are possible. There is no issues in that. You can try in your classroom and you can check any case of any issues. You can just talk to me or you can contact me so that I'll be resolving it. Now I am skipping this platform because we have gone to this platform. Now you can explore the different options. See, many different things are available in the platform. You can explore one by one. I am now just skipping this platform. I am going to another important platform, a platform which can be used for presentation. A platform which can be used to जो आटा पड़ा है ना सादा, a platform which can be used for presentation. So just I am going on to another platform. For that purpose, I kindly request you to Google Nearport. And after Googling, please go for sign up.
I kindly request you to Google Nearport, and after Googling, please go for sign up. सर इसमें जो है क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग यूजिंग एनी डिवाइस, उस पे एक कोड है joinmyquiz.com, फिर एक और कोड है 998861 और नहीं एक नहीं, बार कोड आपका भी दिया आपका है। आपका आपका स्क्रीन में जो कोड जो देख रहा है वही देना है सर. वॉट एवर द कोड दैट इज देयर इन योर क्यूसी स्क्रीन, दैट हैज टू बी गिवन. यस सर। आपका स्क्रीन पे अभी बड़ा से बड़ा कोड मिल रहा है ना, वही वही नंबर जो मिलता है वो देना है आपको. बच्चों को वही शेयर करना सर। ना, बच्चों को वो कोड उस टाइम आप शेयर करना है. जी। So now we are moving on to a platform. The name of the platform which I have told you. Name of the platform which I have told you. The platform is Nearport. So just go to nearport.com. After that, go for sign up. Then Sorry, sir. Just one question. yeah, This quiz platform is paid one or it is free of not paid cost? one, ma'am. It is not paid one, but it can be used. It can be in paid format also. But now we are using a free version. For how many quizzes it can be used for free version? 500 people can be taken at a time. And there is no limit for the number of quizzes? I No, mean, if I just maximum capacity is 2 GB of data. okay. Only thing is that you need to delete the previous one. Okay. Okay. Thank you, sir. Now, after signing in, Pratik sir, anything you want to talk? Yes, sir. I was just asking Yeah, about the same yeah. one. How Ah, many students what we can take at the one side? So that 500, you sir. have said about 500, no? 500, That is what 500. I'm asking about. Yeah. Thank you, Okay, sir. thank you, sir. So after, yeah, correct, sir. After joining, I have not shared anything. I'll come to that. Don't worry. After googling, after signing up, सर मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा. जब आपने साइन अप किया है तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा. डोंट वरी. सर आपने कौन सा वो बताया? नियरपोर्ट मैंने लिखा है सर. मैंने चैट बॉक्स पे लिखा है. आई हैव रिटन मेनी टाइम्स. सो प्लीज लॉग इन. सो उसके बाद मुझे मैसेज डाल दो कि यस और डन, so that I can understand that you have logged in. This can be used for any type of formative assessment where you can have n number of students. Kindly mute the mic. Then after that, all the data will be shared. All the data will be available in the dashboard. So at any time, this can be used for a continuous formative assessment in the class. And the quiz, once you prepare, it will be staying forever unless you delete that. So things will be working fine in that. So no need to worry. Most of you have logged in. Am I right? Most of you have logged in. सर नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है.
ठीक है सर, आप आराम से कर दो, नेटवर्क तो हमको कुछ नहीं कर सकता है ना। तो बी कूल, बी Sir, कंफर्टेबल। are you talking about Wayground? I'm still logged in. नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड। Name. Wayground. So we have done that. I think it is done now. Okay, fine. Hope you have logged in. Very good. Now I am sharing my screen. Please listen. Those teachers who were asking me to share the screen, now you can see my screen. So this is a screen. I think my screen and your screen are similar. Am I right? टाइम ही था, मतलब फ्री ट्रायल वन टाइम ही था, उसके बाद का पेड है ऐसा। Now एक बार आप my screen, please mute the mic. My screen and your screen are almost similar. मेरा मेरा तो हमारा है लैपटॉप। Ma'am, please let the sir explain, then we can listen. So my screen and your screen are same. Now I am starting with, so please listen. Why we are going with quizzes? That's an important thing. Sorry, why we are going with the nearport? That's an important thing. See, the understanding on nearport, I kindly request others to mute the mic. So Shoaib sir, please mute your mic. Whenever you have a problem, you can open and ask me. So why we are going for nearport? See, we have content in different format. We have video form of content, we have audio form of content, we have PPTs, we have Word, we have all the different form of content. Now, whenever you have the content in different format, you can integrate all those content in a single platform. आपका कंटेंट तो MP3 में होगा, MP4 में होगा, .avi में होगा, all these things will be there. So what we are trying to do, we are trying to integrate, we are trying to just embed, or we are trying to make things in a single platform so that it can be visible, it can be used for many different purposes. अभी मेरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं. Just now first I'll create the content. We all will create the content. After that I'll just tell you that how it can be used for demonstration. So just I'm clicking on these 3 lines. Please listen. Can you able to see my screen? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yeah. Okay. I'm clicking on these 3 lines. See, there are 3 lines. I'm clicking on these 3 lines. Then I'm clicking on create a new lesson. So when I click on create a lesson, एक बार देख लो. When I click on create a lesson, you can see create lesson from scratch, upload a lesson, explore the nearport library, then use Google Slides. So all the options are available. So options like create a lesson from scratch, upload a lesson, explore the nearport library, use Google Slides. So all these options are available. So now what I'm trying to do, I'm trying to create lesson from scratch. See, I'm trying to create the lesson from scratch. I'm just changing the name. I'm just putting the name Indore. इंदौर में मैं बहुत बार ये सेशन ले चुका हूँ, इसलिए the number will be there. So I am putting a different number. So I have done Indore 333. Now what I am trying to do, see what I am trying to do. Please listen. Please listen. I have just clicked on the 3 lines, then create a new lesson, then create a new lesson from the scratch. These are the things that I have done. अभी मैं पहला स्लाइड इसमें ले रहा हूं. Just I am taking the first slide. मैं पहले स्लाइड ले लिया. वो स्लाइड में मुझे क्या डालना है? मुझे एक वीडियो डालना है. See, I want to add a video in my first slide. So I just click on video. I just click on video. I just click on add. See, I want to add a video in my first slide. So मैंने वीडियो को क्लिक किया, मैंने add क्लिक किया.
Now, please understand, you can add video from the video library which is available in Airport. See, many different videos are available. You can add videos from the video library which is available in Airport. You can select based on subject. सब्जेक्ट चूज करके, लेवल चूज करके आपको वीडियो सेलेक्ट कर सकता है. नाउ आई एम गोइंग टू यूट्यूब. Another option is my videos. Directly you can upload video. So you can upload the video, you can select the video from any of the drives, you can add video from video library, and the another option, very important option, you can add video from YouTube. So मैं अभी YouTube को क्लिक किया, उसके बाद आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक माय वीडियोस, बिकॉज वीडियोस इन यूट्यूब आर कॉपीराइट, हैविंग कॉपीराइट पॉलिसी, so you cannot take any videos, so I'm trying to take my own videos. So I have my videos in YouTube, so I'm taking a video on higher education. So I clicked on the video, I clicked on save. So what all things I have done? I have searched video from YouTube. मैंने YouTube पे सर्च किया, मैंने एक वीडियो को चूज किया, उसके बाद मैंने सेव बटन डाला. नाउ वीडियो गॉट इंपोर्टेड टू माय स्क्रीन. विच स्क्रीन? माय स्क्रीन ऑफ Nearport. How many of you have done? I think it is clear. Is there any doubt? I think it is clear what I have done. No, I'm not doing it again. Please don't give me task, because I am working on a collaborative medium where I cannot go back because I am in between a session. मैंने तो क्या किया, मैंने तो एक वीडियो YouTube से ले लिया. I have imported the video. और वीडियो मैंने इंपोर्ट करके किधर रखा है? वीडियो मैंने इंपोर्ट करके I have placed it in the Nearport. I think you have done that. Again, I am sharing the screen. See, whatever I have done, I am just repeating. Sir, after clicking scratch from the lesson, I got blank slides and activities and remade activities and upload material. Like the three you can go to upload material. Okay. Then you can select video. Okay, sir. There is no. So now. Okay, upload files. In upload files, there is no option of video. That's why. No, it is there, sir. Scroll down, you will see. So now again, I am back to the screen which we have stopped. Now this is a screen. You can see 3 minutes 32 seconds video is here. 3 minutes 32 seconds video is here. Please listen. 3 minutes 32 seconds video is here. I am trying to play it from here. Can you see that the video is playing in my screen? Yes. Yes, sir. Yes, the video is playing in my screen. Correct. Okay, here I'll tell you one thing. See, the video is a normal video. Okay, normally what the video we are seeing, the same like video. But since it is a class, I just want to make it as an interactive video. I want to ask questions in between. So between the video, between the content, between the demonstration, I'll just add certain questions. अभी एक बार देख लो, मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूं. So there is no sound in the video.
Okay. Yeah, ma'am. I understand that there is no, you are not getting the sound. You will get the sound perfectly when I play it. Don't worry. So now at 42 seconds, please listen. Now the video, we are at the 42 seconds. See, I'm rotating my cursor here. In the 42nd seconds, I'm just adding an activity. Now, when I want to add an activity, when I'm trying to add an activity. Sir, sorry to interrupt, but Yeah. if a student don't complete this activity, can't they see the complete video? They Is it can like see that? they can see the complete video. Okay, okay. So now I'm trying to add an activity. Activity is of two types. One, an open-ended question, and another one is multiple choice question. So two types of activity can be added. See, I'm just adding an open-ended question. Now I'll tell you, this video is on MOOCs. The video here which we were playing, which I am playing, is on MOOCs. So I'm just adding a question. What is your understanding on? Simple question, just to make sure that things are working perfectly. What is your understanding on MOOCs? A question I have added. So I have added a question in between. What question I have added? I have added a question that what is your understanding on MOOCs? Say. Now please listen at 42 seconds. There is an activity. There is a question that students need to respond. You got it. Now again I am playing. Okay. Now again I am adding an activity. Again I am adding an activity. पहले तो मैंने open-ended question add किया है. Now I am trying to add a multiple choice question. See, previously I have added an open-ended question. Now I am adding a multiple choice question. Which of the following is not a MOOC platform? Which of the following is not a MOOC platform? Just options I am adding: Swayam, Coursera, which of the following is not a MOOC platform? We have 4 choices. Out of that, Mentally is not the correct answer. Mentally is the correct answer. So Mentally I have marked as correct answer. I click on save. Now please understand, you can see a circle here. At 40 seconds, you can see one question, and 1 minute and 8 seconds, you can see another question. Now I am playing again. Question. सर एक बार रिपीट करना कि कहाँ पे क्लिक करना है आफ्टर सिलेक्टिंग द एमसीक्यू क्वेश्चन. Which one, ma'am? Which one, ma'am? सर जैसे हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया एमसीक्यू का लास्ट, तो उसके बाद हमने सिलेक्ट कैसे करना है वो आ नहीं रहा हमें. सेट मतलब क्वेश्चन हमने एमसीक्यू. हाँ जी. आप सेव कर दो उसको. सेव का ऑप्शन देख रहा है उधर. आप उसको सर यहाँ पे सेव कर ऑप्शन दो. आ नहीं रहा सर ऑप्शन. क्या देख रहा है उधर? सर हमने ओपन एंड क्वेश्चन करा बट इज एन एक्लिप्स, तो नीचे आ रहा है बैक टू वीडियो गेट स्टार्टेड. नो ओपन व्हाट इज एन एक्लिप्स? आपने एक बार दिखा दो आपका स्क्रीन. जस्ट शो योर स्क्रीन. सर मैं पीसी पे कर रही हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ. ठीक है छोड़ दो. शेयर कर. So listen. So we are going with the second question. स्क्रीनशॉट भेजू सर? स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, आप स्क्रीन शेयर करना है.
सर मैं मोबाइल पे चला रही हूँ, साथ में पीसी रखा है। छोड़ दो. हाँ जी। It's not possible now, ma'am. Then what is ओके there is no need of discussing on it. So now we are working on another thing. We are just moving on. Excuse me, sir. क्या बोल रहे हैं? Okay. Now please listen. Kindly mute the mic, please. Now please listen. This is a 3 minute 32 seconds video. 3 minute 32 seconds video. I am stopping at 1 minute and 58 seconds. I am just cut shorting the video. So now I am trimming the video to 1 minute and 58 seconds. I am just trying to trim the video to 1 minute. Is it only done with our own video, sir? Anything, sir. So No, मैंने अभी but I am doing with a YouTube video. It is not happening here, add activity or different thing. No, it will happen, sir. मैं तो वही कर रहा हूँ ना, तो मुझे जो हो रहा है आपको जरूर हो जाएगा. So Sir, now after I'm adding telling it is not done. I have uploaded the video, but I cannot find the add activity or different thing on this video of the slide. no, definitely it will come. Everything will work. First you play the video, you will get that. No issue. So now we have just reduced the video. We have just reduced the size of the video from 3 minute 32 seconds to 1 minute 58 seconds. Please listen whatever the things that I have done. I have imported a video from YouTube. I have made the video an interactive video. I have made the video interactive video. उसके लिए मैंने 2 एक्टिविटी डाला है. I have added 2 activity. One is an open-ended questions which I have added. Another one I have added a very clearly I have added what? Very clearly I have added an objective type of question. Now I have cut short the video. I have reduced the length of the video and I have made the video to 1 minute 58 seconds. All these things I have done. I just try to click save. Dr. Meena K. Yadav, anything that you want to talk to me? Sir, after adding the questions between the video, how we can save this? So there is an option which is coming very clearly as save. You can just share the screen if you are not getting. Yes, sir, but it shows that exit the lesson. Keep editing. No, either no. exit- आप पहले स्क्रीन शेयर कर दो. So how? कीप एडिटिंग में रख दो. नो इश्यू. शेयर द स्क्रीन. आप जो जूम पे है ना, जूम पे एक शेयर का ऑप्शन है नीचे. So it's showing like this, sir. No, that what is the problem? See, you have add option में आपने ऑप्शन किया, उसमें just you have not given that right and wrong. Whatever it is right on the left side, you can show it as right and wrong. पहले ऑप्शन का लेफ्ट पे आओ मैम. पहले ऑप्शन का लेफ्ट पे आओ. ऐड आंसर वो एक के लेफ्ट पे आओ, लेफ्ट साइड पे आओ. Just near to A, you come to the left side. No, cursor पे. Cursor, Yeah. okay. Now you can activate whether it is right or wrong. नहीं, मैं देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है. आप उसको पहले चूज कर दो, राइट या रॉन्ग चूज कर दो. इफ ए राइट है तो ये चूज कर दो, दूसरा राइट है तो उसको चूज कर दो. And if you want to have next option, you can click on add answer. Yes. Then add answer. Already, sir, this is like A and B. ठीक है. Now नीचे. Now on the right side there is an option called save, bottom.
Yes. नीचे bottom. नीचे 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 this side, right side पे I am seeing that save active in your screen. A blue color option है ना मैम, right side पे नीचे, not on Sir, the top. नीचे, sir, नीचे only delete activity is showing. No, you just show this side of your screen. No, वो कंप्यूटर का वो साइड पे ले आओ. जी. हाँ, उधर क्या देख रहा है, ब्लू वाला क्या देख रहा है? Back to video and get started and top पर sir save and exit लिखा हुआ है. हाँ, सेव एंड एक्सिट कर दो, वही है save. Okay. Then after So I this, think it is that is keep editing because it is working only na. Okay. So that's done. So Thank you. so anything regarding video, what we have done, I will tell you. We have imported a video from YouTube. After that, we have added 2 questions. After that, we have cut short the length of the video. After that, we have saved it. I think you have completed that. How many of you have completed it perfectly? Just give me a message in the chat box that yes or done. How many of you have completed it perfectly? Entire activity you have to do. Yeah, no need of sharing the link. Link कुछ share ना करो. आप just message कर दो कि you have done that. Whatever I have shown, you have done that. That's it. Fine. Now please listen. Yeah, many of you are responding. Very good. Very good. Many of you are responding. Now please listen. I'm again moving on to the same video. Okay. I'm again sharing the screen. See my screen. I'm adding the next slide. Next slide पे मैं क्या add कर रहा हूँ? I just want to add PPT. So I'm going to upload files. And I click add. I just want to add PPT. I have told you. I just want to add PPT. I'm going to upload files. Now I'm going to select the PPT from my system. You can select any PPT. I'm going to select the PPT from my system. I'm just uploading it. I'm getting a message that file processing. Sit back and relax. Your file will be ready shortly. You can see this message. File processing. Sit back and relax. Your file will be ready shortly. Now PPTs are available in my screen. No, sir. Yeah. So I have added 2 things very clearly. I'm telling you, I have added 2 things. First thing that I have added is video. Second thing I have added is PPT. I have added 2 things. First thing I have added is video. Second thing I have added is PPT. So I kindly request you to complete those 2 activities. You can add video. You can create or you can make that video to a interactive video. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद PPT ऐड करना है. Please understand, we have added 2 important or 2 different type of content. File properties तो अलग है. हमने अभी 2 different file property हमने एक ही सिस्टम पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे ऐड किया है. And in the same class. Again I am telling,
Please don't add it as separately. We are integrating in a single class. Kindly check that also. आपका screen एक बार देख लो. You should have only one file. Please understand, you should have only one file where you are having both video and PPT. It's not that you are having two files. You should have only one file with both video and PPT. And if you have done that, you are on the right track. You have added two different activities, two important content, and we will be again coming to that screen. How many of you have done? I kindly request you to complete. I'm just waiting for you to complete. So you will be having an interactive video. You will be having set of PPTs. Done. So once you have completed, you can put a message. So please understand, we have added two different type of content or resources, and those two are video as well as PPT. Done. I'm getting messages from people. Just I'm waiting for your message. I'll move on. My kind request, whenever you have a doubt, you can just open your mic and talk to me. Please don't tell me to repeat, because I may not be knowing that at what point I need to repeat. So whenever any issues, you talk to me very specific to your screen. I'll be responding with that. No issue. Hello. Yes, sir. Can you repeat this? Actually, I am unable to color PPT in slides. No, आपने अभी क्या किया सर? सर मैंने वीडियोस में उस सेंटेंस जो आपने डालने बोला था वो मैंने कर दिया. And second one is the PPT. I'm facing some problem in PPT. So what you can do, you can open that video का जो आपने किया है ना, वो वाला आप ओपन कर दो. हाँ सर ओपन है. हाँ, उसको आप अगला स्लाइड डालो. अभी वीडियो वाला जो ओपन किया है ना, जी सर, उसमें ऐड न्यू स्लाइड. प्लीज डू ऐड न्यू स्लाइड. Yes sir, I did. Now you can go to upload files. Yes, add a blank slides. No, not a blank slide. There is an upload files. Okay. Is there? Wait. So you can go to upload files or material, something like that. Yes, You can click I on did. that. Yes. Now you can select the PPT and upload. Yes sir, done. Now you can select the PPT and upload. ठीक है, अभी दोनों एक ही फाइल पे होगा. It's not that two files have been created. It is only one file is created. Okay. If you Yes, have sir. already created another file, you can delete that. No issue. So I think it is done. Again, I'm sharing the screen. We'll add one more. Listen. Now, what I'm trying to do, please listen. What I'm trying to do, I'm again adding I think my screen is visible. Yes, sir. Yeah. Now I'm adding the content. I'm clicking again. Now I'm adding a PDF document. Okay. See, I'm adding a PDF document. See, I'm adding a PDF. I click on PDF. I click on add. Okay. Now I'm adding a PDF document from my system. What I'm trying to do, I'm adding a PDF document from my system. So a PDF has been uploaded. A PDF has been uploaded. You can see the PDF which is uploaded in the screen. PDF has been uploaded. Please listen. Now, third different type of content which I have added, that is PDF. See, PDF has been uploaded. You can see PDF in my screen. You can see PDF in my screen. So I repeat, first one was video,
a normal video. We have converted that video to an interactive video. Second one was PPT. We have uploaded the PPT, and third one is PDF. So second one is PPT and third one is PDF. So PDF is also done. Sir, I have one Yeah. question. Yeah. So just like we searched YouTube video from for uploading, can we search a PPT as well as PDF? Can I search in Google and then upload? No, you cannot search and upload. You first search and download, then upload. Download, okay. No. We have to keep material in our desktop. Because video is going as imported, where PPT is going in a different way. Okay. Okay, sir. Thank you. So what is the status? What is your status? What is your understanding? So what I have done, I have done that too. I have done that too. 3 important content. One is PDF, another one is video, another one is PPT. I think you have done all the 3. So video, there is an option to trim, sir. On the right side, there is an option to trim. And once you click the trim, that scale will come to left side. You can just scroll the scale to right side. Select the point where you want to trim. First, when you click on trim, automatically the scale will be moving on to left side. You can take the scale will be coming, and you can just choose the point, and from that point you can trim. Okay. So what we have done, we have just done 3 important things. Again, I am repeating. We have done 3 important things. Please have a clear understanding on what we have done. We have done video. We have made it interactive. We have cut short the video. उसके बाद PPT किया है. PPT में बहुत सारा PPT होगा, 10, 15 PPT will be there as per your slide. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमने PDF किया है. And I think you agree with me that all the 3 are different forms of content. We will add further different forms of content after the break. So please keep your system, keep your work as such. My kind request to all those teachers who are working in the mobile is that when you come back, please start working in your laptop, because further we are adding some difficult form of content like all the .avi or all that forms of content. So my kind request to teachers who are working in mobile, you will be finding it very difficult to work in mobile when all that content is coming, because mobile is normally used for teachers, students to go in the class. So please have an understanding that cannot find a PDF option. PDF is in the first itself, ma'am. So after doing all these things, keep your system as such. We'll start from the thing that you have done. Have your break and come back. Okay. So thank you. Don't share the link. No need of sharing the link or anything. Please don't do that. Just take your break and come back. Sir, is it half an hour break? Only for drink.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। चेक चेक करना है उसका ना ना लोडिंग उसमें है सारा लोडिंग उसमें जैसे
Can we start? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I think you are seeing the same screen again. So we have done with different things. Now again I am going. I think you are seeing the screen. Can you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Yes, sir. Now I'm adding again. I'm adding the files again. Please listen. I have added video, I have added PPT, I have added PDF. These three have been done. Now I'm adding the files again. Please listen. Now I'm adding one more slide. In that, what I'm trying to add, I'm trying to add a web page. I'm trying to add a web page. So just I'm checking the web ID of DAVV Vishwavidyalaya. So DAVV. I'm just checking what is a web page. It is dauniv.ac.in. So I'm trying to add here .dauniv.ac.in. Just I'm testing the link. See, it is working fine without any issue. So that's it. Now what I'm trying to do, I'm adding this one. See, now the fourth different type of activity or different type of resources that I added is a web ID or web link or URL. So URL is also added. URL is also added. Again, I am adding. Again, I am adding. What I am trying to add? I am trying to add a 3D image. I'm trying to add a 3D image. Just I'm adding a 3D of full body. Can you see that a full body 3D image is added in my screen? Yes, Can sir. you see the 3D image? Yes, sir. Yeah, I am trying to rotate it. Can you sense it? I'm trying to rotate it. See, I'm rotating the 3D image. I'm rotating the 3D image. Can you able to see that it is getting rotated? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. So 3D is added. 3D is added. Fine. Now, see, we have gone for adding a 3D image. 3D image is added. Now, what I'm trying to add again? I'm trying to add again. See, I'm trying to add a virtual reality. I'm trying to add a virtual reality application, VR. I'm trying to add a virtual reality application. From this virtual reality application, I'm adding Taj Mahal. So just a VR application is added. I am opening it. Can you see a VR application in my screen now? Can you able to see a VR application automatically? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now I'm trying to rotate it. Can you sense it? Are you able to see that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. So I have added a VR application. So virtual reality application is added. Virtual reality application is added. Now, again, I'm going to add. Again, I'm going to add. What I'm going to add? See, I'm going to add an audio. I'm going to add an audio.
I'm checking the audio file. I'm checking the audio files in my system. Yeah, I'm adding an audio. So I have added audio. The message is coming, file is being added. Okay. So now please listen. Video, PPT, PDF, web page, 3D, virtual reality, audio. Now again what I'm going to add. See, we are going to add we were adding the resources now. Now I am adding some activities. Please listen. I'm adding a collaborative board. What is a collaborative board? A place, a board where both teacher and people can interact or respond together. So I'm going to add a collaborative board. I'm going to add a collaborative board. Just I'm adding a topic for collaboration. How do you feel about near code? Just a simple topic I have added for discussion. So collaborative board is added. Collaborative board is added. Please listen. Collaborative board is added. Now again I am going to add another activity. Again I am going to add another activity. What activity I am going to add? See, I am going to add an activity called drawing. So people can draw something. Just I am keeping a subject. Draw an emoji on what do you feel now? Just a drawing. Draw an emoji on what do you feel now? So drawing is also done. Again, I am going to add another activity. See, I am adding a quiz. Here we will call it as time to climb. I am adding a quiz. Just I am adding the first question. Just I am adding the first question. Which MOOC platform has the largest enrollment? Which MOOC platform has the largest enrollment? Answer is Coursera, edX, Swayam, Audacity. So all the 4 different applications I am adding now. So the largest enrollment is on Coursera. I have marked the correct answer. Now I am adding the second question. Second question also I am adding here. Second question is also I am adding here. Which application is used for creating animated content? Audacity, H5P, then Screencast, then Loop.
So H5P is that. So that is also done. Now I am saving. So please understand, I have added two questions. I have added two questions and I have saved. Now again, I'm repeating. See, we have added resources like video, PPT, PDF, web page or URL or web ID or web link, then 3D, then virtual reality, then audio. So all such things we have added. Now, second thing, we have added the activities like collaborative board, then we have added drawing, then we have added quiz, all these things, all these activities that we have added. Now, again, I am adding. So now what I'm adding, I'm trying to add a survey. I'm trying to add a survey. So for that, I'm adding a poll. Adding a poll, just I'm keeping a question. Do you like to integrate technology in your teaching? Do you like to integrate technology in your teaching? Answer is yes. Answer is no. And answer can be can't say. So that's it. Save. Now a survey question is also added with three options: yes, no, and a neutral option. Now again I am adding. Again I am adding. What I am adding, I am just checking what I can add. See, I am trying to add an open-ended question. I am trying to add an open-ended question. Just I am adding how technology can change your style of teaching or your mode of teaching. How technology can change your mode of teaching. An open-ended question also I have added. So please see how many different type of content that we have added. I'll just count again. Video, PPT, PDF, web page, then 3D, virtual reality, audio, then collaborative board, drawing activity, quiz, survey, and finally open-ended question. So we have tried to use 12. We have tried to use 12 different types. We have tried to use 12 different type of we have tried to use 12 different types of activities or resources for this session. Just I am saving. Just I am saving. Now what I am trying to do, I think it is clearly done. We have done all these things. Now what I am trying to do, I'll just show you a demo. But the problem with the demo is that only 50 can be taken at a time, because the strength of the content or the data that we have used is huge. So only 50 will be taken at a time. But again, I'll share the thing. I'll share my screen. First 50 will be taken to the session. So just I think you are seeing my screen. Can you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Now I am going for the live participation. Yes. Now I am going for the live participation. I have copied the link. Now I am putting the link in the chat box.
I've shared the link in the chat box. I've shared the link in the chat box. Hope you have got the link. Yeah, we have 18 participants. We have 50. Yeah, fine. So now we'll start the thing. See, we have reached the maximum. Now I'll start the thing. Those who have joined, can you able to hear the video? No, sir. I think you need to reshare the screen by including the audio. Sir, the link is also not getting opened. Yes, sir. Video is working fine. Everything is perfectly visible. This will be seen only for those people who have joined. Okay. It is working perfectly, sir. So it is working, but sound is not coming. No, sound, ma'am, please check. Sound is also coming. Ma'am, don't check my Yes, sir. screen. Yes, yes, sir. Your Yes, sir. screen. Yes, sir. Sound is also coming. Yes, sir. Sound Yes, is sir. good, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah, now you have a question. Please respond to the question. Please, if you are not seeing the question, just scroll back Sir, yeah. Sir, for me, it is saying that the session has reached maximum number of. Yeah. I have already told, ma'am. You were not there in the session. All these things I have told. So Priyanka Prabhu has responded. We have 9%. I'll just tell you who and all have responded. Shabas Iqbal has responded. Very good. I request everyone. Senuja Mall has responded. Everyone, please respond, because we are just have a both and we have teachers here. So we should have 100% efficiency in doing all these things. Andrews has responded. Any small response also enough. It's not that I'm reading your responses. I'm just checking whether you have responded also. Ranjit has responded. Vikas Banwal has responded. Purnima Vivek has responded. Priyambada Mishra has responded. Very good. Shahid Shah Chaudhary has responded. Agna Vyas has responded. Prasanjit Adak has responded. Very good. Apeksha Srivastava has responded. Archana Shukla has responded. Priyanka Vaibhav has responded. Fauziya Bashir has responded. Jayanti Dansan has responded. We have 60%. Again, it's not enough. Sulnoon Kairuvala has responded. Sumaya has not responded. Sujata Lanka has responded. Very good. Manka Sharma has not responded. Niharika Vardhan Saxena has not responded. Lakshmi Priya Parikh has not responded. Please do respond. Rishabh Baghel has responded. It's only showing 2 slides. I'm not able to come on the 3rd slide. I'm just waiting. Minakshi Pante has not responded. Sana Rahman has not responded. Rajita Vyas has not responded. Anmol. It is not showing the 3rd slide. Ma'am, please listen. Just I'm checking. I am not even moving there. Sarvesh Tanwar has not responded. Priyanka Yadav has not responded. Hina Kausar has not responded.
Jogendra Kumar has not responded. I request everyone to respond. We have 76%. Good. Again, I'm requesting you to respond. Any small response will be sufficient. This gives an understanding that the things are working perfectly on both end. Meenakshi Pante, I request you to respond. Sana Rahman, I request you to respond. Rajita Vyas, I request you to respond. Animone Kaul, I request you to respond. Sarvesh Tanwar, I request you to respond. Achyut Narayan Kesri, I request you to respond. Priyanka Yadav, I request you to respond. Hina Kausar, I request you to respond. Jogendra Kumar. Sapna has not responded. Very good. Now we have 76% only. Still I am requesting. See, once you respond, you will understand the things perfectly. This is a kind request. It's not that once you respond, you will understand the things perfectly. Now, again, I am moving. You can also go front and So how can I respond? I have only 2 slides and only one video that I can play and pause. That's it. now again, the second question. Second question is that we have responses. Now 60% have responded, 58 have responded because 42.2 has no response. So 60% have responded. Again, I'm requesting. I can see who has not responded, who has responded, but still I'm requesting you to see the responses. All these responses. Niharika has not responded. Rishabh has not responded. Aishwarya Gupta has not responded. Meenakshi Pante has not responded. Sana Rahman, Rajita Vyas has not responded. Sarvesh Tanwar has, I think the same people who have not responded previously. Sir, I have done, but my name is shown on the not responded. Okay. Now we have completed the video. We are moving on to the slides. You can see the slides in my screen. The same thing will be visible in your screen also. Can you able to read? I think it is visible in your screen. No issues in that. Yes, sir. Moving on. Yeah. Moving on. Just I am moving. You can also move. Ensure that it is visible in your screen. That's only needed. Yes, sir. Yeah, it's working perfectly. हेलो सर गुड आफ्टरनून Just wait, मैं ma'am. जब कर रही हूँ ना Just wait, सर wait, ma'am. So it's working perfectly. You can go forward and backward without any problem. You have stem options, distractors, key, etc. Just I'm moving only to ensure that it's working. I kindly request you, there is no link. We are in between a session. You can check in your screen also. You can go forward, go backward, no issues.
Can you read what is there in my screen right now? Anybody who is there in the nearport platform, can you read Consideration, rules, options? tips. ठीक है. Just leave. Thank you. Just to ensure that it's okay. Yeah. Now we are moving on. So now we are in the third different content, and it is a PDF. Can you just check whether it can be downloadable or not? Yes, sir. It is. Yes, sir. It is downloadable. Downloaded, Please check sir. whether it is downloadable or not. Yes, sir, it is downloaded. Yes, sir. Yes, sir, it is downloadable. Yes, sir, it's down. Downloaded, sir. Downloaded, sir. I think it is working perfectly. You can check once again. Those who are there in the platform, they can check perfectly whether it is downloadable. If it is downloadable, working perfectly. Now, see, this is what? Just to check whether it is a live web page or a static web page. Please check that screen. It is in live your web screen, page. not my screen, in your screen, and whether it is navigating, whether it is going, check whether it is a live web page or not. It is a No, live sir, web page, live. sir. It is It live is a web live page. web It's a page. live So we, yeah, it is a live screen, no issue. So that URL is also working fine. This is what I need to ensure. The URL is also working fine. Okay. Now this is a 3D. This is a 3D. Can you able to rotate it? Please check it. Yes, sir. Can you? Yeah, you can rotate it. You can see that. Just ensure, just check it. Ensure that it is working perfectly. Yes, sir. We can move Yeah. it. You can move it. Good. So that's also working. That's also working perfectly. Now we are moving on. So I am also just rotating here. You can see how it is rotating. I am also rotating here. Now we are moving. Now this is virtual reality. By default, it is moving. By default, it is moving. Can you just check whether you can move? See, Yes, I am sir. moving it Yes, from sir. here. Of course, Yes, sir. sir. Yeah. Yes, sir. Yes, fine. By default, it will be moving. You can also check whether it is moving or not. Definitely, it will work perfectly without any issue. So you can see a 360-degree panoramic view of Taj Mahal. You can just wait, automatically it will rotate. Otherwise, also you can rotate by your own so that you can see the 360-degree panoramic view. It is working perfectly. Now again we are moving. See, now we are moving on to an audio. Can you play the audio and can you hear the sound or the song, whatever it is? It is only a music. Yes, sir. It is playing, sir. It is playing in your system, na sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Perfectly, sir. perfect. Thank you. Perfectly. So the audio is playing. I request everyone who is there in the game. The audio is playing perfectly. Not playing, sir. Not playing, sir. No, it is playing perfectly, ma'am. No issue. Please Playing, check. sir, You right can now. just click. No, You not in need to my screen. press the You play can button, just sir. play button of your system. In the bottom, there is a scale on that play button. You can check. Yes, sir. It is Yes, playing. sir. Okay, ma'am. Okay. Yes, sir. Okay, fine. That's also. Now we are moving on to another thing. See, this is a collaborative board where teacher and people can respond together. Brainstorming can be done in the class.
So I have given my response. You can also respond. Yeah. Praveen has responded. Shabnas has responded. Vikas, Satya. Very good. See, I'm getting responses from everyone. All your names are here. Very fine. I'm getting responses. I request everyone, if you are here, please try to respond. Check whether it is working or not. It's not that I want your responses. My understanding is that whatever I am doing here, it should be perfect for both of us. Very good. See, all responses are coming. We have around 5, 10, 15, 20, 25 people have responded. Again, waiting for responses from everyone. Yeah, we have around 30 people have responded. I'm requesting everyone to respond. You can go for multiple responses. You can delete the response. Everything is possible. So multiple responses, deleting of responses, all such things are possible here. Yeah, very good. So that collaborative platform, collaborative board is working fine. Collaborative board is working fine. Yeah, people are uploading the image. Very good. Thank you. Now, again, we are moving on. This is another thing. Here you want to draw. Here you want to draw. Previously you were responding. Now you are trying to draw something. See, I am having the screen of everyone. Aishwarya, Apeksha, Achyut, Archana Shukla, Sudun, Agnya Vyas, all screen is here. See, somebody have started, somebody have not started. Motar Rasa Rizvi has not started. Mariam Khan has not started. Many have started. Some have submitted. Except two, many have started. Very good. I request all of you to start. Come with beautiful emojis. Manka Sharma is in progress. Priya is in progress. Sarvesh Tanwar in progress. Sumaya has submitted. Vikash Banwal in progress. Yeah, we are getting different emojis from different teachers. Okay, it's working beautifully well. Yeah, people are coloring the emojis. Very good. We are getting colorful emojis. Very good. Except two, all others are having very clear emojis here. Now moving on. Now this is queues. Here, what is the difference? See, now 50 people are on board in the near port. All the 50 will not be taken to the queues. So we have 50 on board in near port. What I am telling? All the 50 will not be taken to these queues. So please join to the queues. You will have an option to join. Yeah, 2 people have joined. Very good. Take your emoji and join. Sir, 10 I think people have. if those, sir, I want to say if those have done the quiz, they can exit, then the others can join. Yeah, Because the maximum just limit wait, is ma'am. Please wait. Sir, I have come out of it. I don't know. The screen is lost. That's because if someone is connecting, if some technical issue is there, other will be out because we have a huge group. Na? It will work with 50 only. This is not a paid version. Okay, Paid version will work with 500. Okay. So 21 are connected, 22 are connected. So again, I am waiting.
Out of 50, we have 22 got connected to the queues. Only for the 22, the queues will be running. This is an understanding. Out of 50, 23 got connected to the queues. Only for that 23, the queues will be running. I am starting it from here. I request you to join. I request you, those 50 I am requesting, not the others. Others cannot join. Who are there in the 50, they can join. They can be a part of this queues. 25 got connected. Half got connected. Half got connected. Just I am starting here. Only 2 questions and you know the answer also. We are not checking on those things. Just how it works. That's an important thing. Any answer is fine. No issue. Sir, I have stuck near emoji. Leave it, ma'am. No issue. We'll come back. So the first question is over. Yeah, first question is over. Now we are on the second question. So we are on the second question. Yeah, second question is also over. We have the positions. Shahbaz Iqbal is first, Priyanka Prabhu is second, Praveen Lohangar is third. All these positions are here. Again, that's not much matters to us. So we are moving on to, now it is a survey. You can respond to the survey. Now it is a survey. You can respond to the survey. Any responses is fine. So we have responses from everyone. So responses are coming. I request everyone to respond. Any response is fine. So that's it. It's almost done. Now we are moving on to another thing. So we are moving on to another important thing. Yeah, this is an open-ended question. I request again to respond. Anything is fine, but make sure that you have a participation, you have a response here. Yeah, somebody has started. I'll just check who has started. Suchata has given. Priyanka has given. Sujata Priyanka has given. Satya has given. Jayanti has given. Sumayya has given. Shakit has given. Fauziya Bashir has given.
Prasanjit has given. Aishwarya Gupta has given. Shanuja has given. Anubhav has given. Shabas has given. Praveen has given. Very good. 32% again, but again, very short of at least 50. Requesting others also to respond. 42%. Swati has given. The submit button is not available. I'm not able to see the submit button. Just put an enter in your dash. This one. Priyanka Yadav, Agni Vyas, Aishwarya Gupta, all has given. Prasanjit Adak has given. Niharendu Burman is given. Sulnoon has given. I request others also to just respond whatever you feel like. Priya S has given. Rachana Shukla has given. Sapna has given. Still Achyut not, Narayan Khetri. still my name is available here, not answered, but I answered and pressed the Your enter. good name, ma'am. Your good name, ma'am. Dr. Sarvesh. It's showing no answer. You can just, I think some screen issue is there. You can just either shorten the view, you will see the button there. Okay. Sarvesh, I'm checking. Sarvesh has not given. Yeah. That's it. Now it is going 52%. At least we have crossed. Now you can go backward also. We have finished all those things that we have integrated here. You can go backward also, but I'm not going backward. I can just stop here. So just I'm clicking on the menu button here. I'm clicking on the menu button and I just click on end session. Now the question coming, are you sure you want to end this session? Yes. Now you will be out of the nearpod. Okay, that's fine. And the nearpod session which I have created will be there in my dashboard. So I have demonstrated a nearpod kaise chalta hai. What all things can be integrated, in what way it can be integrated, all such things I have demonstrated. My kind request to you is that share the link of the content that you have created or the session that you have created with at least 6 different types of content. It's not that one, you don't share with video or PPT, just have a 6 different types at least. You can have many, no issue, but at least with 6 different types of content, whatever you have created, you can save it, you can share the link. This is the activity. Please try to do the activity and please try to share the link. And while sharing the link, share the active link, share the live link. Don't share the web page link. Web page link will not take you to the session. Web page link will not take you to that particular activity. Share the live link. So I have demonstrated everything to you. In between, if you have any doubt on doing something, you can talk to me. Yes, sir. Good afternoon. My name is Priyanka Yadav. Sir, Okay, I'm tell me. doing all these things now on mobile. But Okay. while playing your video, it can't play properly. Actually, the problem with the mobile is that sometimes it may not be compatible. So normally, when you are working on a teacher node, like we are working in the administrator node. So for students, mobile will be perfectly playing. There is no issue with the students. But while you are creating the content, I have already told the request is that you have to create the content through this one, laptop. Okay. Because all other answer I have given and that was submitted, but except the first one. Yeah, video will be one. creating problem. Then 3D Yes. images will be creating problem. No, Then 3D images also we have seen properly. then fine. Then another thing is that simulation is there. Simulation is there. If you are from science background, you can create simulations. So simulation also will create problem with the mobile. Okay. Because I'm out of station, so Okay, I don't have got it. No PC issue. right now. I can understand. No issues. It's all that how you take it. No issues. Okay. So I Thank you, request sir. once you have created, once you have completed that exercise, it is not that you can go with the 6 alone. You can go with any number, but at least you should have 6 divergent content, 6 divergent content, so that you can share the live link. You can share the, again I repeat, you can share the live link.
Yes, sir. I'll try. Okay. Okay, So sir. this, Thank you, sir. this is the live session. Actually, it is called as live session. Yeah. Yes, sir. Okay. So can we add activity inside a YouTube video link? Yeah, definitely. YouTube video link पे नहीं है. Where you have added YouTube video link, sir? In that URL. Yes, sir. If I paste a URL and then No, then can you we cannot edit? then you cannot add activity. Once you import the video only, you can add activity. Oh, okay, right. Thank you, sir. That means, sir, we can prior one day we should prepare all these things which you taught, and next day in the classroom we should present it in front of that will be the live now Yeah, that will be with the live. Either students. you can go with in an online mode, like people sitting at various different places, and you can go in a synchronous mode, or you can go with a teacher-led live presentation in the classroom, taking Yeah. answers at once. Yes, sir. Thank you, sir. Indian Institute of Management. So I kindly request you to share the live link. After completing the content, after doing all such things, you can go for sharing the live link. And those who have done, they can add variety of content. The link shared by Praveen is right, Nancy is right. Those who have shared the creating the content in mobile is possible, ma'am, but editing the video in Sir? mobile is sometimes it creates problem. That's an issue. Sir? Yeah. I have created the slides in Nearpod, but I was not able to save or share the links. Where we can get it out? No, whatever you have created, that means it is saved. For If you have sharing a live link, we have to copy that Nearpod Not- link which was there. Sir? No. You have to go for live session and then share. This is the lesson builder where I have built it. Live session. Live session is. So where can you show it in your screen, sir, where we can find out that live session? Sir? What, ma'am? We can get the live session, sir. Can you show it in your screen, sir? No, ma'am, you can save it because I'm not in that screen now. So you should understand that we are in a collaborative mode. Every in between slides will not go in a such thing that you can show it. So first you save it. Once you keep your cursor, you will get an option called teach. Then you will get an option called live. Okay, sir. So I request everyone, once you have completed, once you have done, please share the link in the chat box. And the link should be live link. Again, repeating, link should be live link.
Those who have shared the link, I have checked it, no issues. Others, I am requesting the link should be live link. Once you complete the content integration stage, you just share the link. And those who have done that, they can add different things. They can go for divergent things. It's not that whatever I have shared only you can add. Shoaib Ahmad, link is not correct. Jagdish Mohan Rao, link is not correct. Kaushalendra Singh, link is correct. Vikash Banwal, link is not correct. Niharentu Burman, link is not correct. Lekha, the link is correct. Agastha Adlin, link is correct. Yeah, I think it is done. I'm not trying to go with that again. Whatever the link that you are sharing is almost okay. Surendra Kumar Jha, link is right. Agastha Adlin, link is right. Fauzia Bashir, link is wrong. Shailendra Jaiswal, link is right. Surendra Kumar Jha, it is right. Minake Yadav, it is right. Vikas Banwal, it is wrong. Jay Godeja, it is wrong. Sana Afrin, it is right. It's not like it will be open, sir. The thing is that people cannot log in. People cannot come to directly to the screen. Sapna Gupta, it is right. Injilela Karandi, it is right. Purnima Vivek, it is wrong. Niharika, it is right. Purnima Vivek, it is wrong. Niharika, it is right. Sapna Gupta, kindly share once again. Jayasrinath, it is wrong. Priyanka Prabhu, it is wrong. Priyanka Vaibhav, it is wrong. Sapna Gupta, it is perfect. No issue. So, Jogendra Kumar, it is right. So I think it is happening perfectly. Now you can delete anything. See, whatever you have created, that thing, if you don't need, you can delete. No, I'm not talking about the entire session. Entire session also can be deleted, but you can delete the specific slide. You can delete the specific item. Harleen Kaur, it is right. So any specific item can be deleted, no issues. All that you can do is that you can just, any editing, any order can be changed. For example, we have gone with the PPT, first video, then PPT, goes on in that way. You can change that order. That order also can be changed because you can go with the PPT first, then with some other thing, whatever it can be. Agnavyas, it is wrong. So all such things can be done perfectly. Pravida, it is right. Purnima Vivek, it is right. So I think that part, it is clear. Things are working fine. So now we are moving on to another platform. We are moving on to another platform, and the platform is used for
the platform can be used for creating games. Platform can be used for creating games. It can be used for motivation. It can be used for an understanding that you can change the mood of the class. So all such things we are going for another platform. We'll go for to that platform. Niharendra Burman, it is right. Durgana Ranjit, it is right. Sulnoon, it is wrong. Jasrinath, it is right. Priyanka Vaibhav, it is right. Shahid Singh Chowdhury, it is wrong. So now Navneet Krishnan, it is right. Okay. Share is very simple. Once you save it, you can keep the cursor. You will see an option called teach. I think you are seeing an option in your screen called teach. When you save it, save the session. So ओके आप सर सेव करने के बाद टीच सेशन देखना है टीच टीच देख लूंगा आप पहले देख लो टीच देख लूंगा क्लिक ऑन टीच देन लाइव पार्टिसिपेशन ओके live session or live participation something is there you can click on that again you will go to the same thing copy the link and share ठीक so now again we are moving on to another important thing another important application I'm sharing my screen Dr. Sulnoon it is right I'm sharing the screen I'm going on to another application the name of the application is Bluecat hosting the game. See, I'm hosting a game called Crypto Hack. Again, I'll tell you in this game, in a free version, we are using free version. Maximum participation can be 60. Maximum participation for this game is 60. Sir, can we log out nearpod? Yeah. So I'll share the link now. Yeah, I have shared the link in the chat box. You can click on the link and join to my screen. Again, I'm telling this is a gamification application. Satana has joined. Thank you. So we have 49 people logged in. Forty-nine people have logged in. I told you the maximum strength is 60 for this game. Different game is having different thing. 57 has logged in. Okay. Now I think it's a game. It's a game. We are starting the game. 59 people have logged in. I kindly request you to check your screen. Questions will be there on your screen. I'm starting it from here. Please read the instructions. Questions will be in your screen. Just read the question, respond to the question. Even if you get a wrong response, no need to worry.
Sir, it's showing welcome hackers. New user with active. You can hack the others, and you will get their score. Shabas is leading with Priyanka and in second position. Two minutes to go.
1 minute to go. Last 10 seconds. It's done. So the thing is finished. Now we move on to Priyanka Prabhu as first, Praveen Loharka as second, Dr. Priyanka M as third, Fox, Arlene, etc. They are all in the subsequent positions. Now we are talking about a platform. The name of the platform is BlueCat. The name of the platform is BlueCat. So what is the advantage of this platform? The advantage of this platform is that there are many different inbuilt games in this platform. So many games are available in this platform. Just we have used one set of games. So I have a set of, I think you can see my screen again. You can see my screen again. I have a set of questions here. I have a set of questions here. Now with this question, it has been many games have been played. Now when I want to host this game, just a second. When I want to host this game, please listen. So this many games are coming. Please see, you can see different games. Some of the games are active in the plus mode. Some of the games are active in the ordinary version. All these different types of games are coming. When you take a game, on the right side, you can see how many people can play, what is the status of the game. All that details is also available. So this is something where you can use different games. And this platform is definitely, this is one of the platform where people gets motivated and people understand that how these are played in the classroom. Now this is a way. Now I can just go for my settings, how many games have been played, all these details I'll get. See the plan, whether I'm going with a normal plan, all these details I'm getting. Everything will be available in the different games are available, different curriculum which is available. All these things I can go with that. Now this is an understanding. Today we have played, before which we have played on May 26th. So every details are here. This is what just I want to tell you. So the platform that we use today for games is what the platform is known as BlueCat. So there are many different assessment platforms. You have a platform called Tesmos. The platform which is known as Tesmos, which can be used for training, repeated training like UGC net orientation, CSIR net orientation, or any type of exam preparation. All these things you can use a platform which is known as Tesmos.
The advantage of Tesmos is that if you have 10,000 or 20,000 questions with certain key names, you can search the question and you can make different question from the question bank. You can search the question and you can make a different question sets. So Tesmos is one platform. Bluecat is another platform. Kaisala is a platform. Socrates is a platform. Kahoot is a platform. So many different platforms which are available. In Tesmos, the spelling I'll put. Many different platforms which are available for e-assessment. Nowadays, when it comes to AI, different AI platforms are also working in this. QSys is working with an AI support. Nearcode is having AI-assisted mechanism for lesson planning. So all such things which you can explore, which we have just checked once. So you can explore and you can just have an understanding that how you can use it for the class. So I think I have taken 3 important applications. Now I'm not going with another application because it takes time. So I have taken 3 important applications. If you have any doubt, if you want to discuss anything from any of the applications that I have discussed, you can talk to me and I'll be responding to your questions. I have gone for a formative assessment application, which is known as QSys. I have gone for a different item integration platform for presentation, a presentation application where you integrate different type of content, which is Nearpod. And I have gone for a gamification application, which is known as Bluecat. So all the 3 applications I have demonstrated. You have done it. Many of you were doing it along with me. It was very interesting that you also worked along with me. So any doubt, anything that you want to talk to me, you can talk to me. I'm very happy to respond to your questions. So thank you. Any doubt, any questions, anything that you want to talk to me, you can talk to me. I'll be responding to your questions. I'll be having whatever you want to ask to me, I can respond for that. And any other thing that you want to share or talk, I'm also very happy to listen to that. So the session is very informative and we have a very nice session, hands-on practice then and then. Thank you for your very informative session, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, I will have. Okay, sorry. Thank you so much, sir, for very informative and practical session. Thank you. Hello, sir. So yeah, tell me, sir. Sir, when it comes to Nearpod, we Yeah. are trying to include different type of formats of content into the presentation. Yes. This can be also done in the PowerPoint itself. Like we can add images, we Yeah, can add. yeah, but it will not work as an integrated form, sir. You after doing all these things in the PowerPoint, basically the base mechanism is like slide only. But after doing that, it will not work in an integrated way. You get responses, you can assign responses, you can assess responses, you can talk. In that, integration is absent. Okay, sir. Okay, I understand. You got my point. Okay. Yes, The sir. remaining things, okay. If you are ready to, I'm not presenting from my side now. I'm just giving for a candidate. You can run your own system. You can run your own class. That's the way in which it is working. Okay, sir. Thank you. Thank you for such a nice and good session, sir. So thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. It was a really practical session what you have delivered, sir. So thank you very much. We'll meet again. If there is no question, a formal vote of thanks by Dr. N. Sir, I have a question. I have actually a problem. Yeah, tell me, ma'am. Tell me. Yeah, sir. After 11:45, I was not able to log into Nearpod. I have tried 3 different Gmail accounts, and I have No. The tried issue all was. I'll tell you. The issue was log into Nearpod or to my demonstration. No, log into Nearpod only. Nearpod, it is possible, ma'am. It is possible. No issue. How do you sign sir, up? How do I you sign signed up it with previously? Google account. So I signed Definitely it it will with work. Google account. I created Definitely. a presentation and One thing you can do. You can just shut down. And you can do it once again, or else if any issues, you can talk to me. Okay, it will work perfectly. But for the presentation demo session, it will go with the 50, the maximum. That's the only issue. Okay, thank you. So thank you all. Thank you very much. Bye. Sir, formal vote of thanks by okay. Dr. N. Bhagyalakshmi.
Associate Professor, Head Department of Commerce, NGM College, Pollachi, Coimbatore District, Tamil Nadu, sir. On behalf of all the participants, I extend my sincere gratitude to Dr. V.P. Joseph, Professor in the Department of Education at Central University of Kerala, for delivering an insightful and highly informative session on AI for digital content creation and designing learning materials. Sir has clearly explained the importance, purpose, and practical applications of various tools like quiz.com, Nearport, Blocket.com. Sir, we thoroughly enjoyed the session and learned a great deal about using Nearport effectively. The demonstration on how to integrate various resources and interactive activities into a single lesson was highly valuable. We gained practical insights into designing engaging and interactive learning experiences that help the participants understand concept more effectively. On behalf of all the participants, we assure you that we will make every effort to implement the ideas, tools, and strategies shared during this session to the maximum extent possible while teaching our students, thereby enhancing the effectiveness of the teaching learning process. I also express my heartfelt thanks to the organizers, Malaviya Mission Teacher Training Center and Devi Ahalya Vishwavidyalaya for organizing this excellent program and providing us with such a valuable learning opportunity. My sincere appreciation goes to the coordinators, technical support team, and all the participants, nearly more than 370 participants from different parts of India, for their active participation and enthusiastic engagement. Once again, thank you, Dr. V.P. Joseph, sir, Professor in the Department of Education at the Central University of Kerala, for your valuable contribution and inspiring session. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you all. Bye. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time, and we hope that we will get blessed from your words of wisdom. Thank you so much, sir. Thank you, Sunny. Thank you. Okay, participants, I think we can proceed for lunch, and we'll be back around 1:50 exactly, so that we can resume our session from 2 o'clock. Thank you so much, everyone. Okay, sir.
you. क्या हुआ? किसने? मेरी सुनो बात नहीं। Priyanka ma'am, please mute your mic.
Excuse me. When afternoon session starts? 150. 150. Okay, thank you.
શિયાળામાં સસ્તું પડે એમ? હા એમાં ઓફરો હોય ને હા એટલે અને જૂનું મોડલ હોય તો સસ્તું પડે ને મતલબ નવું જ હોય એ પણ 2025 છેલ્લો મહિનો હોય નહીં સાહેબ 2000
Excuse me, is the meeting started? Not yet, sir. Okay, around what time? So, okay. A very good afternoon, participants. We are just waiting for our resource person. I'm just checking. Dr. Karadlata ma'am has already joined us. Ma'am, very good afternoon and welcome to MMTTC Indore, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, shall we start with your permission? Yeah, sure. Ma'am, actually, in this course, we have around 480 registrations. And in the morning session, around 350 plus participants have joined in. Right now, including you and me, there are 223. With your permission, can we wait for 2-3 minutes? Yeah, sure. Okay. Oh, okay. Thank you so much, ma'am. I request all the participants to please open up your cameras. And before ma'am start, I just request you all to please do check your screen names. If it is not a valid screen name, again, I am repeating, please do change that. Dr. Rahman, are you there? Sana Rahman, ma'am. Yes, sir, I'm there. Hello, sir. Have you gone through ma'am's resume? Yes, sir. Okay. Bengal ma'am, with your permission, shall we start? Yes, please. Okay. Sorry for the intervention. Okay, participants, welcome to the post-lunch session of day 2 of short-term course on generative AI and its integration in teaching learning.
For this session, we have Dr. Kiranlata Dangwal ma'am with us. Ma'am, firstly, on behalf of all the participants, on behalf of our director ma'am, Dr. Namrata Sharma ma'am, our partnering institute, Jamia Hamdard, our course coordinator, Dr. Shireen Jafar ma'am, I'd like to welcome you to the group. With your permission, before starting, I request Dr. Sana Rahman ma'am to please start with ma'am's formal introduction. Over to you, ma'am. Sana ma'am. Good afternoon, all the participants. Hope you enjoyed the morning session, and the next session will be on the AI tools in the lesson planning that will be conducted by Dr. Kiranlata Dangwal ma'am, who is an esteemed associate professor in the Department of the Education, University of Lucknow. With over 27 years of the dedicated service in the field of education, she is renowned for her expertise in the ICT-enabled education and hello. Am I audible, sir? Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, sir. We know for our expertise in the ICT education and educational technology. She has made significant contribution to the more than 70 research papers and the 26 authored, edited, and translated books. She had committed extents to the developing e-content MOOCs and open educational resources recognized by the national institutions such as NCERT and UNESCO. Her excellence is further reflected in the national international honors, including the Shiksha Ratna and the Uttarakhand Gaurav Samman. As respected academic leader, she continues to inspire innovation and quality in teaching, development, and educational technology. Welcome, ma'am. Kindly deliver your lecture so that we can be facilitated for more information on the AI. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you so much. First of all, I would like to thank Director MMTTC Devi Ahilyabai University coordinator and everyone, those who are associated with it and the organizing committee. Thank you for your invitation. So let's start today's interaction that is about the AI in lesson planning. And it is really very nice to see that most of you have switched on your videos. Now I'll feel that I'm talking with human beings, not with the screen only, and be interactive, because I can understand that after taking your lunch, it is very difficult to sit in front of a screen. And even you have the liberty of switching off your audio and video also, but try to learn something, because I can see that many participants are there and good number of participants. It means you have interest. That is why you have joined this program. So just give me time to share my screen first. Just a moment. I hope my screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So the main concept of lesson planning is this is basically related to the teacher training program. And especially whenever we talk about the lesson planning, it means we are talking about the B.Ed or teacher training program, but it is not like that. Lesson planning is very important for all of us. And please also let me know whether I should speak in English only or in Hindi or bilingual. Just please let me know. English, ma'am. English only, ma'am. Okay. So here, when I'm talking about the lesson planning and especially with reference to artificial intelligence, it is very important to know about the various concept of artificial intelligence, and we will do some interactive activity also with the help of AI tools, and then how we can integrate all these things in our lesson planning. That is very important. So when we say artificial intelligence, my question is from all of you. Just think about it, and you can write in chat box also.
And I have shared my YouTube link also, where I have shared few basic concepts related to it. So you later on after this session, you can go through all those things also. So when we say artificial intelligence, what usually comes to your mind? This is my question from all of you. Okay, you can write in your chat box. Later on, we will do some interactive activity also. So whenever we are thinking about artificial intelligence, it might be, means in our mind, it might be robots. It comes robots, or someone can think about automatic driving cars. Someone may be thinking about the Siri, Google, and all those things. Let me see in chat box also what you have written. Just a moment. Okay. Okay, some of you have written bilingual. I should speak in bilingual, Hindi, English. Okay, in between I'll speak in Hindi also. So intelligent, that is not natural. Okay, means you have written about the artificial intelligence in a bookish language, that it means this. Okay. Now, when we are talking about artificial intelligence, it means whatever we are doing these days, it is automatically AI integrated things. Now, if you are not aware about this artificial intelligence in the present era, you can imagine that what kind of problems what kind of problems you can face in your daily teaching and learning, and even in your daily life. So it is very important to know about all these things, that what is artificial intelligence and what are the various concepts related to it. Now see this picture. Now we all know about the headaches caused by the migraine or caused by the hypertension, caused by the stress, but see this picture. If you have ever thought about headache caused by not knowing the most powerful technology shaping our world today, that is AI, then what would happen? क्या हो सकता है अगर आपको आज AI के बारे में नहीं पता होगा? So this picture humorously reminds us that in the 21st century, the greatest pain is not medical, it is technological ignorance. When we are ignoring these things and we are saying that, oh, chalega, क्या करना ये सीख के, तो इसके बिना अब काम नहीं चल रहा है, even in our daily teaching and learning also. Unknowingly, we are using all these things, but we are using as machines are saying to us. Machine हमसे कहती है, ये लिखना है, ये लिखा है, means most of the time we are dependent on autocorrect only. हमें लिखना था हार्ट हेल्थ थैंक्स, मशीन ने लिख दिया हार्ट बर्न थैंक्स. सोचिए क्या होगा जब उसके पास हमारा ऑटोमेटेड लिखा हुआ चला जाएगा. So we need to be aware about all these things. Just imagine a teacher not knowing how to use ChatGPT or Gemini or Perplexity or Claude, while students are already generating assignments with it. क्या होगा तब? हम सोचते हैं कि हमारे पास विद्यार्थी कितना बढ़िया लिख के लाया है, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, ये वो. जब तक हमको ChatGPT नहीं पता था, तब तक हम सोचते थे वाह, बच्चे तो बड़े होशियार है, एक से एक सेंटेंस लिख देते हैं, एक से एक चीजें लिख रहे हैं. लेकिन जब पता चला कि नहीं, ये तो कोई भी कहेगा ChatGPT से, वो लिख के दे देगा. So in every field, if you are unaware about AI tools, like journalist, if he is unaware about AI tools, while media industry is being transformed by the automated content creation, a researcher, if he is ignoring or she is ignoring about the AI-powered analytics, while global research moves ahead at lightening the speed, means they are using all kinds of research tools, means they are using for creating review literature, they are using for even they are using for writing references also, for in-text citation, for each and everything they are using. So this
particular message which I am trying to tell you, that is about AI. If you don't understand AI, the world will move on and you will be left behind with a digital headache. So don't keep this headache with you. Try to remove it. Try to understand about the AI and where you can use all these things. That is also very important. Now, the most important thing is we are not aware about that how to use this AI. इसका हमें जनरेटिव यूज तो आता है, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई. इसका सही तरीका क्या है यूज करने का, क्योंकि जब आप इसको यूज करते हैं तो उससे पहले टेक्नोलॉजी अवेयर कर देती है जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं ऐसे यूज होनी चाहिए. दैट इज वाई एज अ टीचर यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. अब यहाँ पे देखिए कि जो हम आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं, बिकॉज इन टुडेज सेशन वी विल एक्सप्लोर हाउ एआई कैन एक्चुअली रिमूव दिस हेडेक बाय बिकमिंग आवर co-thinker, co-creator and companions in teaching and learning. कैसे ये हमारा साथ दे सकती है, हाउ वी कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर AI. So instead of fearing AI, we need to learn how to collaborate with it intelligently. And that's the only medicine for the 21st century headache, जिसको हम बार बार आपको इसमें भी शो कर रहे हैं कि हेडेक को, इस डिजिटल हेडेक को रिमूव करने का क्या मेडिसिन है. मीन्स यूज ऑफ AI. And if you will use it properly, then it will make you a smart person, smart academic. You can enhance your smart academic personality. तो ये जो AI है, इसकी अगर हम बात करें कि एक इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑल्सो. आजकल AI से ही वो गाना है ना कि तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही सुरमई शाम आती है, दिस एंड दैट. ये गाना बहुत पॉपुलर था एक टाइम में. आजकल AI के साथ यही हो रहा है कि हम जो मॉर्निंग में उठते हैं, AI इंटीग्रेटेड अलार्म, AI इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सब हमको उठाती है. हम बैठे बैठे कहते हैं स्विच ऑफ आवर फैन, स्विच ऑन लाइट, ये करो वो करो, बैठे बैठे ऑर्डर दे सकते हैं. those who are using all these technologies in their modern houses. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि एक सिमुलेशन है, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन. Again, I'll tell you, simulation of human intelligence in machines. And it is about creating machines that can think, learn, and make decisions, almost like a human being. Now, my question is from all of you. Can you give me some examples where machines are thinking like a human being? Yes, please. कुछ 2-3 लोग प्लीज अपने ऑडियो को ऑन कीजिए और बताइए कि इस तरह के कोई एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जहां मशीन ह्यूमन बीइंग की तरह सोचना शुरू कर देती है. बताइए. यस प्लीज, एनी वन ऑफ यू. मैम, ऑटोनॉमस कार्स. वेरी गुड. ऑटोनॉमस कार. एलेक्सा, ठीक है. कोई भारतीय वो भी दीजिए जो भारत में हम लोग बहुत आराम से चीजों को यूज कर रहे हैं, उसके कोई एग्जाम्पल. प्रवीण जी ने बताया कार. हाँ, और एनीथिंग एल्स? Chatbots. चैटबॉट्स, ओके. Robot. हाँ जी, नहीं सुनाई दिया. और हाँ, मैडम, yes, ma'am is saying that when you are saying, when we say act as a professor to chat GPT, yes, then that particular chat GPT give you answer like a professor, okay. Google DeepMind, okay. मैम, शॉपिंग साइट्स पे जो हमें ऑटो रिकमेंडेशंस मिलते हैं, यार, फॉर दैट मैटर एनी रिकमेंडेशंस दैट वी गेट थ्रू डिफरेंट साइट्स Yeah, इज एन एग्जांपल very ऑफ right. AI. Very right.
आजकल हम जैसे फेसबुक खोलते हैं वो हमको सुंदर सुंदर सूट साड़ीज के वो रिकमेंड कर देता है। उसको लगा कि मैडम फ्री हैं आजकल, मैम की समर वेकेशन है, तो आराम से मैम को रिकमेंडेशन दें तो हमारी सेल होगी। यस Co-pilot, I think so. हाँ Co-pilot. Ma'am, face unlock and Dr. phones. Anil, you are saying something? Yes, please. इसमें नहीं शो हो रही। कहाँ चेक कर रहे हो आप? Ma'am, one example is when in lens card it senses your face and customize your specs. Yeah, very right. बहुत बढ़िया। उसका आपको Ma'am, face unlock and iPhone. आपने ऐसे ऐसा रजिस्टर किया अपना? Okay, okay, very right. रजिस्टर Now हो you पाया हुआ all है। have given very good examples. ऐसे Nice. रजिस्टर इसलिए किया है अब क्योंकि आपका देखिए, कोर्स मुझे कंप्लीटेड लगता था। है किसी का ऑडियो ऑन कंप्लीटेड है। था क्योंकि आपका 2 एग्जामिनेड है और 2 का आपका विजिबल हो रहा है जो आप एग्जाम दे रहे हो। Dr. Anil, I think your audio is on. Okay, thank you. हाँ, हरजोत सिंह जी आपका भी ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। ओके, वेरी नाइस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर कि मशीन आपकी तरह सोचने लगती है, आपके लिए सोचने लगती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स कि एआई इन एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दैट व्हाइल communication यानी every time you see your Gmail automatically filtering spam emails, that is AI at work. It means when you use chatbots on the website for queries, AI is responding to you. Google Translate or real-time subtitles in YouTube videos, again that is AI. But again here I will tell you कि हमें ये जो चीजें दे रहा है, जो आंसर दे रहा है, वो मशीन की तरह सोच रहा है। कई बार क्या होता है, ये मशीन थोड़ा गड़बड़ भी सोचती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, whenever we are using Google Translation, एक बार हमने Google Translation में लिखा कि मुझे ट्रांसलेट करके दो राम आम खाता है, उसने लिख के दे दिया राम इज अ जनरल अकाउंट। जैसे एक होता है ना कि से नो टू अल्कोहल, उसने ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया कि शराब को कुछ मत कहना। तो इस तरह की चीजें भी एआई करता है, जिसके लिए हम और आप जिम्मेदार होंगे कि वी आर नॉट यूजिंग एआई इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि whenever we are doing communication, whenever we are using these equipments for health, for business, for entertainment, everything, we are using AI, integrated है इसमें। ठीक है, तो आप देखिए कि एक अगर हम इसको फिलोसफिकली सोचें तो नाउ AI is in our pockets only। अब एआई हमारी पॉकेट में है, हमारे घरों में है, हॉस्पिटल्स में है, इवन इन आ क्लासरूम आल्सो। इस पिक्चर को देख के आप समझ सकते हैं कि एआई मेक्स मशीन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। कैसे उसने कर दिया है, कैसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रेंड हो गया है और हमको चीजें बताता है। यानी यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ मैन वर्सेस मशीन स्टोरी, इट इज मैन विद मशीन रीराइटिंग द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन बीइंग के साथ इफ वी आर यूजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज as a human being or we are trying to humanize this AI, then only we will get the good results. अब यहाँ पे again we have one question. इसका आंसर फिर से आप दीजिए, चैट बॉक्स में दीजिए या बता के दीजिए कि some people are worried, will AI replace humans? क्या ऐसा होगा? Just I need your answer. No, ma'am. No, ma'am. They both need to integrate together and work. I don't think so this will ever happen. It will ever happen. Okay. कुछ पिक्चरें, कुछ मूवीज हम लोग ने देखी हैं आजकल जिसमें ऐसा हो रहा है। Ma'am, but AI also requires some kind of human intervention. So I don't think so that it is going to get completed, replaced completely. But yes, they are going to assist us with some kind of work. Yes,
True, very true. Means it will not completely replace the human being, but somewhere, somehow, it may be, if we will not use it in a proper way. So, now see, there are many participants. Some नीतीश जी, ओके, डन. जैसे ही ध्यान आता है वो अपना ऑडियो बंद कर देते हैं. ओके, नाउ सी, you said that AI will not replace the human beings. लेकिन अभी आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स हम बताएंगे जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AI might be good at calculations, predictions, and even writing poems, but it still can't enjoy a cup of tea or laugh at a bad joke. आज भी वो काम नहीं कर सकता जो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं. जैसे हम आनंद में जीवन को जीते हैं, खुश रहते हैं, ये सब चीजें, तो हम ये कल्पना करें कि एआई रिप्लेस कर देगा पूरी तरह से, नो, बिकॉज अगेन आई विल से दैट कंट्रोलिंग पावर इज इन द हैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो यहाँ पर जो एआई है उसको हमें कैसे वो करना है. जैसे एआई इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस. जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे वो करेंगे, कैसे हम इस समय जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको कैसे इमिटेट कर रही है और कैसे हमें उसको कंट्रोल करना है. बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन कम्युनिकेशन, हेल्थ, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट. ये है, इन सब में है. एंड इट इज शेपिंग आवर वर्ल्ड इन वेज वी कुड हैव इमेजिन्ड इवन अ डिकेड्स ago. आप सोच के देखिए अभी क्या है, इस समय जो काम हो रहा है इस पे, एआई पे जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट 3 वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि एआई का यूज हम इन चीजों के लिए कर ले तो वी विल ऑल्सो बिकम गॉड. मीन्स ह्यूमन बींग्स आर थिंकिंग इफ वी वुड बी एबल टू वर्क इन दीज लाइन्स. पहला उन्होंने कहा दैट इज टेलीपोर्टेशन, कि हम आंख बंद करें और हम जहां जाना चाहें हम वहां पहुंच जाएं. आप लोगों ने वो, मुझे याद है दैट आई वाज यूज्ड टू सी द सीरियल्स रामायण महाभारत. उसमें एक अजीब सी आवाज आती थी, फिर कुछ चमकता था और वहां पे जो व्यक्ति होता वो गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता था. आज इंसान यही सोच रहा है कि ये टेलीपोर्टेशन जो है ये अगर एआई के थ्रू संभव हो जाए तो कितना मजा आएगा. हम बहुत सारे ऐसे काम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे. दूसरा जिस पे वो वर्क कर रहा है दैट इज इनविजिबिलिटी. वो सोचता है अगर मैं गायब हो जाऊं, वैनिश हो जाऊं और चुपचाप गायब होके इधर उधर घूमता रहूं तो कैसा होगा. And the third thing in which he is working, that is time traveling. Time traveling का मतलब क्या है? Time traveling means if we are able to go to past or future. अगर हम अपने past में चले जाएं या हम अपने future में चले जाएं तो कैसा रहेगा? What would happen अगर हम ये 3 चीजों में वर्क कर लें तो हम इंसान की तरह हम क्या होंगे, हम भगवान बन जाएंगे. वी विल बी लाइक अ गॉड. इस पे बहुत काम हो रहा है इवन इन अ टीचिंग एंड लर्निंग फील्ड, इवन इन अ various other aspects also. I hope you must have heard about these concepts. तो अब हम यहाँ पे आते हैं because we are teachers and we are talking about these things in AI in education and all these things. अब यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजों को कि कैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट है, कैसे हम इस पे वर्क करें, कैसे क्या करें. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांजिशन टू एजुकेशन. मीन्स एआई इन द प्रेजेंट एरा एंड इट्स रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग और लर्निंग में क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे छोटी छोटी चीजों से हम बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं अपनी क्लास में. सो एआई इज ऑलरेडी ऑल अराउंड अस. But the real question for all of us as a teachers, as educators, as learners, that what is the meaning of digital empowerment for teachers?
हम टीचर को डिजिटली एम्पावर्ड कैसे बनाएं, कैसे कहें. नाउ सी, because you all are from higher education and you all must have heard about the API. क्या होता है API? What is that? Active pharmaceutical index in our pharmacy. Active performance index according to your subject, I think. API. Ma'am, it is academic performance indicator. Yes, very right. Academic performance indicator. यानी आज आपको जॉब चाहिए या जॉब में प्रमोशन चाहिए या कैडर पोस्ट में भरना हो तो यू नीड टू फिल योर API फॉर्म. मुझे लगता है आप सबको वो तो कभी भूलता नहीं होगा. क्यों मीनाक्षी पांडे मैम? कि API का फॉर्मेट तो हम नहीं भूल सकते हैं, है ना? क्यों? बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर दैट. हम ये कोर्सेज भी अटेंड करते हैं तो हमें लगता है चलो हमें इसके कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, ये होगा. These days, now government is also saying you should be very good in digital learning. You should have very good command over digital learning. हर चीज में आपके पास कमांड होना चाहिए. नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे कि आप एक अच्छे टीचर. That is why here we are now, because I am just not talking about the using of computer or smart boards in the class. ऐसा करो. So I'm not talking only about the using of computer or smart boards in the classroom. उसको हम AI या digital empowered नहीं कहते हैं. Again, I'll say two concepts, दो शब्द हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं. One is digitization and second is digitalization. Can you tell me the difference between both the things? Digitization and digitalization. चैट जीपीटी मत यूज करिएगा, अपने माइंड से बताइए इसका डिफरेंस. फटाफट हाथ शुरू हो जाता है जो लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप पे बैठे होते हैं. Ma'am, may I? Yes, please. Yes. Just an idea. Obviously, I'm not searching anything. Yeah, sure. Digitization is basically, let's say, converting something in the form of some computer document. You know. Okay. So we are digitizing something is in the form of a paper. We are converting it into a digital document. That is digitization. Digitalization is basically using all those digital products or maybe digital platforms and enabling digital maybe processes. Okay. That is digitalization. Okay, very good. Good. To some extent you are right, but something different, that digitalization is and digitization both are different concepts. And whenever we are using both these concepts in our education field, now we should be aware about these two terms. That is why, because we are going to integrate AI in our teaching and learning. ठीक है? Anyone else? Those who want to answer? ठीक है. अब देखिए कि डिजिटाइजेशन मीन्स, जैसे प्रवीण कुमार जी ने कहा कि डिजिटाइजेशन मीन्स सिंपली व्हेन यू आर स्कैनिंग एनी डॉक्यूमेंट. आपका सिंपल उसमें था हार्ड कॉपी में, आपने उसको सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में ले आए, आपने स्कैन किया या PDF बनाया, दैट इज डिजिटाइजेशन. But whenever you are using that particular content or PDF file or that digital content into a very good PowerPoint presentation or into a very good in the form of communication or presentation, that is digitalization. Means whenever you are using all these technologies in transformation of your teaching and learning, that is digitalization. Okay, because today I am going to tell you about the AI in lesson planning. Here, what you are going to use? Digitalization means we are not just talking about the use of computers or the smart boards or hardware only. We are going to use it as multifaceted approach, or we are trying to use these technologies as a confident person, as a confident teacher, a skilled teacher, and creative teacher. Then only we can say that we are using technology in a meaningful manner, because it helps teachers or students in a very interesting way, because these days technology is interconnected.
and students are also very competitive, and they know how to use all these technologies in our daily learning. So when teachers are digitally empowered, the entire educational community becomes stronger, more resilient, and future ready. Why? Because these days we are having very different kind of generation. एक बिल्कुल अलग तरह की जनरेशन हमारे सामने है, और इस जनरेशन को हमको पढ़ना पढ़ाना है, and that is why we need to be a digitally empowered teacher. Ma'am, I have a small doubt. Yeah. Ma'am, we keep on talking about empowering our teachers, empowering them digitally to equip with the AI tools, but still I think there is this taboo that whenever a teacher or maybe a faculty member, they are very good with AI tools, then they are taken in a very loose sense that, okay, this is not their work, they may have copied it through AI. So even if they have, used their own brain, but still it is there in the mind that it might have come from AI since they are good with AI tools. So we are talking about the acceptance of AI, but still somewhere I think, we have not accepted it completely, especially in the education sector. Yeah, very true, Alka ma'am. And why these things are happening? Because recently there is one study that someone has posted one document in one plagiarism tool, and that was out of print content, and it was published in approximate 200 years ago, and it was self-written. Everything was self-written, और किसी ने ऐसा जो हाथ से लिख के और फिर उसको लोग रख लेते हैं, and AI has given 90% of plagiarism, that tool. तो अब आप सोचिए कि जब ये चीजें ऐसी हो सकती हैं, तो प्रेजेंट में क्यों नहीं आपसे कोई कहेगा, क्योंकि आपकी ही ह्यूमन इंटेलिजेंस को AI यूज कर रहा है. For that also we have various types of options that what we should do. अभी क्या है कि हम लोग अपने विद्यार्थियों को पहले एनकरेज करते थे कि ट्राई टू मेक योर असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, टाइप्ड कंटेंट, दिस एंड दैट. नाउ इट इज व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट आई एम डूइंग. आई एम टेलिंग देम टू राइट इट डाउन in your own handwriting. Then you can make PDF and then post it in email. Yes, ma'am. The reverse is happening. अभी हम उनका वाइवा लेते हैं और तब उनको नंबर देते हैं, हम उनके असाइनमेंट पे उनको नंबर ही नहीं देते, बिकॉज आई नो दैट दे विल कॉपी एंड पेस्ट ईच एंड एवरीथिंग. तो अलका मैम, आपकी इसी बात पे एक छोटी सी शायरी सुनाते हैं आपको, बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड वी लव टू लाइनर्स एंड शायरीज. हम यहाँ पे कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग. दैट इज व्हाई थोड़ा सा ये मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है. इसमें ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं या हम सब कुछ चैट जीपीटी से ही लेते हैं, बिकॉज दीज डेज वी आर डूइंग आवर वर्क इन दैट मैनर ओनली. तो यहाँ पे हम कहते हैं हमेशा कि संभल संभल कर रखते हैं कदम, संभल संभल कर रखते हैं कदम इस जहां में, मीन्स इस वर्चुअल वर्ल्ड में. संभल संभल कर रखते हैं कदम इस जहां में, क्योंकि पता है नफस नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है. नफस नफस यानी पल पल का, मीन्स वट एवर वी आर राइटिंग, वट एवर वी आर स्पीकिंग, वट एवर वी आर क्रिएटिंग, we are accountable for each and everything, especially in the field of education. हमने 2 शब्द भी लिखे हैं, मीन्स whatever. अभी आप देखिए कि अभी यहाँ पे हम आपके साथ जो बोल रहे हैं, और सबसे पहले कैप्शन लिख के आता है ये स्टार्ट होने से पहले कि योर दिस पर्टिकुलर Gmeet और whatever it is has been recorded. क्या ये जेन्युइन है? आप खुद सोच के देखिए. आप पीपीटी मांगते हो किसी से, या आप उसकी बिना परमिशन के आप उनकी चीजों को रिकॉर्ड करते हो, ये क्या है? दिस इज अगेंस्ट कॉपीराइट, दिस इज अगेंस्ट प्लेगरिज्म. लेकिन वी आर डूइंग मे बी अननोइंगली और इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, कुछ भी है. तो ये सब क्या है? नाउ दीज थिंग्स आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक्स. और जब हो गया है तो इसके लिए आप और हमको ही कोई ना कोई समाधान निकालना है कि हम कैसे इन चीजों को करें.
अभी यूजीसी ने बहुत बड़ी पॉलिसी निकाल दी है, कौन सी? प्लेगरिज्म की पॉलिसी, कि 10% के ऊपर अगर होगा तो ये पेनाल्टी, वो पेनाल्टी, सब कुछ है. But then also what we are doing, we are still copying and pasting from the AI tools. And then humanizing it again on the AI tool. Yes. Yes, Means ma'am. we are using 4-5 AI tools to make our content like we are writing it. इतनी मेहनत उसमें करते हैं हम लोग, उससे अच्छा तो एक पेज खुद लिख सकते हैं. लेकिन क्या है, धीरे धीरे चीजें, सिनेरियो सब चेंज हो रहा है, हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है. तो ये सारी चीजों को इसीलिए यहाँ पे, बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेन एवर वी आर talking about the lesson planning at higher level, we are not going to develop this lesson planning. लेकिन हम अपनी क्लासरूम में जाने से पहले, जैसे बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उनको कहते हैं कि विदाउट मेकिंग लेसन प्लान यू कैन नॉट गो इनटू योर क्लासरूम. लेकिन हायर एजुकेशन में तो हम ये नहीं कहते. लेकिन अलका मैम, आप भी जानते होंगे कि बिना माइंड मैपिंग किए हुए हम लोग क्लासरूम में नहीं जा सकते. आज हम ये सोच के न जाएं कि अगर हमें आज क्लास में क्या पढ़ाना है तो हम वहां पे सिर्फ गप्पे मार के ही आ जाएंगे. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जानना, सही यूज करना. तो आपका जो ये कंसर्न है ये बहुत रेलिवेंट है, और इस पे हम लोग सोचेंगे भी, बात भी करेंगे. अभी आगे चलते हैं. Sure. Thank you very much. You're welcome. So here I was talking about the digital transformation. तो अब यहाँ पे देखिए, because we all know that our nature of learning is dynamic. Students today are not the same as the students 10 or 15 or 5 years ago. Now their expectations, their ways of accessing knowledge, and even their attention span are influenced by the technology. So as technology is advancing, the way we teach must also evolve in a different manner. आप सोच के देखिए कि जो आप 5 साल 10 साल पहले जिस तरीके से क्लास में जाते थे, चौक उठाते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अपने नोट्स देखते थे, अब आप वो करके देखिए. It will be very difficult for you to stay in the classroom. Why? Because now you have very different kind of generation in front of you. So this means teachers must be equipped with the skills to integrate digital tools effectively into their teaching methods. They need to know how to use all these things. अभी हमारे सामने इस समय बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. As a teacher, as a higher education teacher, हमसे कहा जाता है you need to develop MOOCs, you need to develop e-content. और हम क्या करते हैं, यहाँ से चीजें उठाते हैं, वहां से उठाते हैं, और MOOC और ये, और कहते हैं MOOC बन गया, e-content बन गया. No, that is not e-content. Those are not MOOCs. We need to have a proper digital literacy कि ये आखिर में क्या चीजें हैं. ये एक्चुअल में जो हमारी जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, मींस टीचर्स मस्ट बी इक्विप्ड विद द स्किल्स टू integrate digital tools effectively into their teaching methods. They need to know how to use these tools, not just as add-on or add-on things, but as instruments that make learning more engaging, personalized, impactful. ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं आज. At the same time, the increasing diversity of students in terms of learning styles, abilities, their background demands that teachers be trained in differentiated instruction. हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरी क्लास में हमें पढ़ाना है, स्पेशली अभी देखिए there are approximate more than 300 participants here. अभी हम यहाँ पे चाहें कि हमको एक एक्टिविटी करानी है, और ऐसी एक्टिविटी करानी जो सारे टीचर्स यहाँ पे जो बैठे हैं उनको मजा आए और वो इंटरेस्ट लें और इंगेज भी हो जाए. तो आई शुड हैव दैट कॉम्पिटेंसी, दैट I should have the knowledge of those AI tools, that what type of digital tools, what type of AI tools I can use to engage these more than 300 participants. So because every learner is unique, and training helps teachers respond to that uniqueness with confidence. अभी यहाँ पे आप देखिए, जो हम आपसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि empowering teachers, and this will change the word, not empowering
स्टूडेंट या बहुत सारी चीजें, बिकॉज दीज डेज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल सोशियोलॉजी, बिल्कुल अलग तरह की हमारी जो ये सोशियोलॉजी है चेंज हो गई है। तो इसके लिए अभी एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। आई होप मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द बुक्स ऑफ युवल नोवा हरारी। पढ़ी है आप में से किसी ने? युवल नोवा हरारी, ही हैज रिटन, चैट में लिखिएगा अगर आपने पढ़ी है। He has written very good books. उन्होंने एक बुक लिखी सेपियंस, होमो सेपियंस। सेपियंस में उन्होंने बताया that how human being came into the existence, इस तरह की चीजें लिखी उन्होंने। फिर उन्होंने जो दूसरी किताब लिखी वो लिखी 21 lessons for 21st century, means what are the major problems in the 21st century and what are their solutions। जो तीसरी किताब लिखी ये सब कंटिन्यूएशन में थी, इसीलिए हम आपको इसका बताया। जस्ट अ मिनट। कि फिर तीसरी जो किताब लिखी उन्होंने वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि वो उसी की बात कर रही जो आज हम और आप बात कर रहे हैं, एआई इन टीचिंग एंड लर्निंग, एआई इन लेसन प्लानिंग, एआई इन कोलैबोरेटिव थिंग्स और ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज रिशेप्ड आवर एवरीडे बिहेवियर, whether it is our dependence on autocorrect या our obsession with selfies। हम जहाँ बैठते हैं वहां सेल्फी लेने लगते हैं, ये क्या है? ऑब्सेशन ही तो है एक तरह का। तो इस तरह की कि हमें ऑनलाइन एडिक्शन, जो ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया, इस तरह की चीजें जो है। तो उन्होंने अपनी एक जो बुक लिखी तीसरी किताब, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो किताब उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने कहा होमोडियोस। होमोडियोस का मतलब यहाँ पे है कि नाउ आफ्टर सम टाइम, मीन्स आफ्टर 2025 या आफ्टर 30, उन्होंने स्पेशली कहा कि होमो सेपियंस विल बिकम होमोडियोस। और होमोडियोस अभी हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे कि होमोडियोस किसको कहा उन्होंने। होमोडियोस में उन्होंने कहा, एंड दैट इज अबाउट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। In this, Harari asked, what happens when Homo sapiens begin to evolve into Homo Deus? क्या होगा अगर Homo sapiens Homo Deus बन जाएंगे? Man as God, इंसान एक भगवान की तरह बन जाएगा, means as self-made God of planet Earth। हम अपने आप अगर हम सोचने लगते हैं कि हम भगवान बन गए, हम सब कुछ कर सकते हैं with the use of various AI tools, with the use of all these things, then what would happen to this planet? तो यहाँ पर उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि इसको ध्यान से सुनिएगा कि हरारी gives us a glimpse of both the dreams and the nightmares of the 21st century. He explores how natural selection, means the process that shaped us for millions of years, is now being taken over by the intelligent design, artificial intelligence and genetic engineering। कि जो ये अब समय है, जब एक समय था कि हम भगवान से डरते थे या हम कुछ चीजों से हमें लगता था कि ये सब प्रकृति किसी ने बनाई, आज हम कहते हैं हम इंसान है, हम ही भगवान है, हम ही ने सब कुछ बनाया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने रखा। इन दैट बुक, इन होमो डियोस, हरारी रेजेस सम वेरी pressing questions। उन्होंने कहा कि what will happen to democracy when Google and Facebook knows our political preferences better than we do ourselves। फेसबुक गूगल से मतलब है उनका कि ये सोशल मीडिया या जितना भी ये जहां इंटरनेट है, हमारे से ज्यादा हमारे बारे में हमारा मशीन जानती है। अभी आप अगर उसके साथ खूब बातचीत करने लगिए चैट जीपीटी के साथ, तो देखिए वो आपको किस तरह के जवाब देते हैं। Once my son was continuously interacting in chat GPT। वो उससे कुछ कह रहा था तो वो बेटा जवाब दे, उसको फिर प्रश्न पूछ रहा था, बार बार क्वेश्चन। तो लास्ट में चैट जीपीटी ने लिखा उसको कि इट इज बेटर टू अटेंड योर क्लासेस, यू आर आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस टू मी। यानी कहीं ना कहीं वो इंसान की तरह तो सोचने लग गया है ना कि जब बच्चे ज्यादा दिमाग खाते हैं तो हमको क्या जवाब देना चाहिए।
फिर ऐसे ही हरारी ने एक फिर से कहा, फिर एक क्वेश्चन रेज किया कि व्हाट विल हैपन टू द वेलफेयर स्टेट व्हेन मशीन्स रिप्लेसेस ह्यूमन इन द जॉब मार्केट, क्रिएटिंग व्हाट ही कॉल्स अ मैसिव यूजलेस क्लास। उन्होंने कहा कि जो ये हमारा जो जॉब मार्केट है, अगर ऐसे ही एआई और जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये सब होने लग जाएगा, तो कैसे हमारे पास जिन बच्चों के पास स्किल्स नहीं होंगी, केवल डिग्रीज होंगी, तो कैसे इनके लिए एक जॉबलेस मार्केट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा टीचर्स से, पेरेंट्स से कि हाउ डू वी प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर 2050, इवन फॉर 2100, when we don't even know what the world will look like, जब हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा जो आगे आने वाला संसार है वो कैसा होगा। तो हमें इस समय अपने बच्चों को कैसे तैयार करना चाहिए फ्यूचर के लिए। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सेंट्रल टू हरारीज कंसर्न। उन्होंने अपनी बुक में बहुत अच्छे से कि एआई टुडे इंक्लूड्स मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, एक्सपर्ट सिस्टम, ये सारी चीजें। और ऑलरेडी एआई कैन ड्राइव कार्स, प्ले गेम्स, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस, इवन राइट एसेज ऑल्सो, सब कुछ कर सकता है। तो टुमारो इट मे बी राइटिंग बुक्स, और हो ही रहा है, सारी सारी किताबें हम घोस्ट राइटर से लिखवा ले रहे हैं, म्यूजिक कंपोज हो जा रहा है। अभी हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू ऑल हैव टू मेक योर ई कंटेंट, आपको ई कंटेंट बनाना है, ठीक है। आप चलिए अपना एक टॉपिक इसमें लिखिए, चैट बॉक्स में कोई भी एक टॉपिक लिखिए, एनी ऑफ द टॉपिक्स, कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज एक लेसन प्लान बनाएंगे ई कंटेंट के फॉर्मेट में। नाउ राइट योर टॉपिक, चैट बॉक्स में फटाफट लिख लीजिए, स्ट्रैटेजिक HRM, ओके गुड, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, डॉक्टर मीना के यादव मैम, आपने कौन सा टॉपिक लिया है बताइए। Yes, ma'am. Good afternoon. Good Ma'am, afternoon. I will plan related to CNS activity. That's why I written here neuroscience. Okay, your topic is Activity related to CNS, central nervous system. Okay, central nervous system, CNS. Suppose the name of your topic is CNS, ठीक है? Yes, Okay, I'll take your example only. ठीक, चलिए। Okay, you all have written your topics. अब मान लीजिए हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं इन टॉपिक्स पे, वट एवर यू ऑल हैव रिटन। मैम का टॉपिक लिया CNS। अब यहाँ पे ये बताइए कि आपने लिखा CNS या विमेन एंटरप्रेन्योरशिप या ह्यूमन डेवलपमेंट या कंज्यूमर बिहेवियर, ये आपने सिंपल टॉपिक्स लिए हैं। जब आप ई कंटेंट बना के या लेसन प्लान बना के वेबसाइट में लॉन्च करेंगे या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे LMS पे लॉन्च करेंगे, तो क्या आपके स्टूडेंट्स या आपकी ऑडियंस इनको देख के अट्रैक्ट हो जाएगी, वो पढ़ना चाहेंगे इसको? यस और नो बताइए। वो कहेंगे ऑलरेडी देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट इन गूगल, हम क्यों पढ़े CNS के बारे में, हम ज्यादा क्यों पढ़ें, अभी हम गूगल में ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए फिर बताइए, हम अपने कंटेंट को कैसे क्रिएट करेंगे? अभी देखिए, आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल ओनली, CNS। अब आपको करना क्या है, यू ऑल हैव टेकन वेरी सिंपल टॉपिक, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दीज टॉपिक्स इनटू वेरी कैची टॉपिक।
आप भी जानते हैं कि कोई भी बुक उसके कवर पेज से सेल ज्यादा होती है. Recently, I have gone through a book, and the name of book was Everyone Has a Story. Vijay Kumar Pandey ji, please switch off your audio. Vijay Kumar Pandey ji, thank you so much. तो हमने जब वो किताब देखा कि Everyone Has a Story, हमने वो किताब ली, खरीदी, लेकिन उसके बाद देखा अंदर इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन वो किताब को देखते ही हम अट्रैक्ट हो गए और हमने वो किताब खरीद ली. इन द सेम मैनर यू ऑल्सो नीड टू मेक योर टाइटल. ठीक है, आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं. लेसन प्लान का जो टाइटल होना चाहिए वो कैची होना चाहिए. वो ऐसा होना चाहिए कि देखते ही जो आपका स्टूडेंट है वो कहे अरे वाह, तो बड़ा अच्छा ये कंटेंट है, बड़ा अच्छा लेसन प्लान है, देखें इसके अंदर क्या है, कैसा है. ओके, May I give an example, ma'am? हाँ, I'll give you example. हमने डॉक्टर मीना वाला एग्जाम्पल. May I give you an example? yes please. मैम फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में जो जंक फूड चल रहे हैं उसके अंदर पिज़्ज़ा लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. और लोग ये जानते भी हैं इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. बट अगर मैं इस टॉपिक को चेंज कर दूं, इसको उल्टा सोचूं, लाइक पिज़्ज़ा इज अ हेल्दी फूड, देन इट विल बिकम कैची. ओके, आप इसको कैसे लिखेंगे? पिज़्ज़ा इज अ हेल्दी फूड. Isn't it going to be misleading? पर ये तो मिसलीडिंग हो जाएगा ना स्टूडेंट्स के लिए. Yes, it will be misleading for students. उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे ना व्हाई पिज़्ज़ा इज हेल्दी. ओके, मिसलीडिंग है और पिज़्ज़ा हेल्दी कैसे होगा उसको एक्सप्लेन. ओके, देखिए आप अपने टॉपिक को बहुत कैची बनाना चाहते हैं तो इसको दूसरे वे में भी ले सकते हैं. ठीक है, अभी देखिए हम आपके पिज़्ज़ा का ही एक ना उसका पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं मैम. हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब आप लोग ने इसके अपने, अभी हम मैडम का इसके टॉपिक को कैची टॉपिक बनाते हैं. Now you can use various kinds of AI tools. जैसे आप चैट जीपीटी यूज कर रहे, जेमिनाई कर जो भी कर रहे हैं, क्लॉड यूज कर रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, अपने ही टॉपिक के लिए फिर से उसमें लिखिए कि रीराइट दिस टॉपिक इन अ वेरी कैची स्टाइल. अभी जैसे आप पिज्जा की बात कर रहे थे तो इसको भी हम लोग लिखते हैं. जैसे हमने यहाँ पे मैडम के टॉपिक के लिए लिख दिया है दोबारा, CNS द मास्टर कंट्रोलर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब ये क्या है, जो बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा कैची हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा. आप इसको और दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ सिंपल मैनर, ट्राई टू राइट इन अ कैची फॉर्मेट. अब व्हाई, बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट द लेसन प्लानिंग. तो लेसन प्लान को हम एक ई कंटेंट के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं. ओके, अब जैसे पिज्जा, अवॉइडिंग पिज्जा इज हेल्दी. वेरी गुड, इन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लिख दिया. इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं. जैसे आप पिज्जा के बारे में उनको बताना चाहें तो हो सकता है आप इस तरह की चीजों को भी एब्रीविएशन दे दे के कर सकते हैं. अ पिज्जा अ डे melts your health away. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो इन दिस मैनर यू कैन क्रिएट योर टाइटल. अभी यहाँ पे देखिए हम AI टूल्स की बात कर रहे हैं. आई टॉक्ड अबाउट युवल नोवा हरारी एंड आई टॉक्ड अबाउट वेरियस अदर कॉन्सेप्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द लेसन प्लानिंग की इन चीजों को जब हम AI टूल को अपने एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूज करते हैं तो क्या क्या हो सकता है. क्यों, क्योंकि अभी देखिए हम सेकेंड हाफ में जब आपके साथ कोलैबोरेटिव टूल्स की बात करेंगे उसमें हम थोड़ा सा उसी को इंटीग्रेट करेंगे लेसन प्लानिंग के उसमें. तो अब यहाँ पे देखिए कि जो एजुकेशन है, यहाँ पे हरारी ने क्या आर्ग्यू किया. हरारी आर्ग्यूज दैट आवर करंट एजुकेशन सिस्टम बिल्ट अराउंड रोट मेमोराइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, जो कि सब आउटडेटेड हो चुकी है.
and now they were designed for the 21st century. जो हमारी traditional system था, जो हमारी memorization था, ये सब, these are not applicable in the 21st century. And in a world where information is instantly available, facts, figures matter less than skills to analyze, adapt and innovate. अब यहाँ पे इन्होंने युवल नोवा हरारी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लर्निंग, ये वो जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी बात की गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। ये देखिए, जो हम आपसे कह रहे थे ना कि होमोडियोस कौन है, this is the generation who is becoming homodios. यानी throughout the day when we are using mobile phones, laptops, desktops, throughout the day we are using a mobile phone like this, then what would happen? क्या होगा हमारी गर्दन को, क्या होगा हमारे इंटरनल पार्ट्स को? तो उसी को इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से धीरे धीरे ये जनरेशन चेंज हो रही है। और 2030 के बाद कहा गया है कि जो इंसान होगा वो छोटा हो जाएगा हाइट में, उसकी गर्दन आगे की ओर झुकी हुई होगी, उसका मुंह ऐसे निकला हुआ होगा। यानी कि ये सारी वही चीजें, just because of the excessive use of technology, what would happen to this generation? अब आगे इसमें देखिए कि जो हम आपसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो मशीन है, what they are doing, they are shaping our behavior. They are shaping that how we learn, how we communicate, how we make our decision, and even how we see ourselves. Now, because we are going to start writing about our lesson planning, now we need to think about these things also. कि ये मशीन हम किस तरह से सोच रही है और कैसे हम अपने लेसन प्लान को बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने सिर्फ एक पिज्जा की बात की, तो आपने एज ए ह्यूमन बीइंग कितनी चीजें सोच दी उसके बारे में, एंड यू हैव टेकन द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ऑल्सो, एंड यू हैव टेकन the help of various digital tools also. तो इसमें देखिए आपके पास कितनी हेल्प मिली, कितना असिस्टेंस मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एआई टूल्स। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? पिज्जा की। और पिज्जा की बात करते करते अभी ये टास्क अगर आप जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मोर देन 300, तो हम यहाँ पे दें तो हो सकता है पिज्जा के हमें 400 300 एब्रीविएशंस मिल जाएं, कॉन्सेप्ट्स मिल जाएं, इमेजिनेशंस मिल जाएं, क्रिएटिविटी मिल जाएं, और क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से जो हम सोचें वो मिल जाए। तो अब यहाँ पर हम कैसे इसको आगे करेंगे, इस पे आते हैं। बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस कंटेंट फॉर whom? फॉर दिस जनरेशन अल्फा। एंड हु आर दिस आई जनरेशन? जो ये हमारी इंटरनेट जनरेशन है, जो जनरेशन अल्फा है, ये सारी जनरेशन के लिए हम अपने कंटेंट को कैसे क्रिएट करें, कैसे लेसन प्लानिंग बनाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पे अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्यों? बिकॉज दिस जनरेशन यूजेस टेक्नोलॉजी नॉट एज अ टूल बट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द माइंड। अपने दिमाग, अपने माइंड का एक्सटेंशन की तरह अपने इस मोबाइल फोन, लैपटॉप को यूज करती है। तो अब यहाँ पे अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, एंड सम ऑफ यू प्लीज डिस्क्राइब अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जनरेशन गैप। व्हाट इज दिस? क्या है ये? यस प्लीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेशन गैप? I think my question is very easy. Actually, it's not the matter of age, ma'am, but it's way of thinking also it comes, where it comes to the generation gap. Like years, previously we used to think that decade is the generation gap, but now 1 or 2 years also becoming a generation gap. Very true, madam. Ilahi Sheikh, madam. Am I correctly pronunciation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's true. Ma'am, you have said very rightly that yes, it is not the matter of duration.
Because earlier this gap was approximate of 10 to 20 years or maybe sometimes 30 years. लेकिन आज के दिन में आप देखिए ये गैप 6 महीने का हो गया है. 6 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे, साल भर में ही इतना ज्यादा गैप आता जा रहा है जनरेशन टू जनरेशन कि हमें पढ़ना पढ़ाना और सोसाइटी में रहना सब चीजों में बहुत कोप अप करना पड़ रहा है. अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि generation gap means it is in a means when I was talking about the Yuval Noah Harari and the things I told you that now it is converting from Homo sapiens to Homo Deus, means a stage where artificial intelligence, biotechnology, digital tools, all these things are there nowadays. तो अब यहाँ पे जब हम जनरेशन गैप की बात करेंगे तो आप देखिए कि जनरेशन गैप में क्या है. द गैप इन थिंकिंग, गैप इन बिलीव्स, गैप इन ओपिनियन, ये सारे गैप इन टेक्नोलॉजिकल यूसेज ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजीज. तो ये जनरेशन गैप आज हम इस रूप में ज्यादा देख रहे हैं कि कैसे ये चीजें होंगी, कैसे हम इन चीजों को करेंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute, देयर इज वन अर्जेंट कॉल. जस्ट अ मोमेंट, ओके, जस्ट 1 minute.
एक कॉल आ गया था। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द जनरेशन गैप। अभी देखिए कि क्यों, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरेशन गैप, बिकॉज we have different kinds of digital generation right now. And whenever we are talking about the lesson planning, about the AI tool, we need to know about these generations, कि कौन सी जनरेशन हमारे सामने है, हमें उसको पढ़ाना कैसे है, उसके लिए कंटेंट कैसा होना चाहिए हमारे पास। ओके, सो first of all, we are having digital immigrants. Digital immigrants means these are individuals from the older generation, means they born before the emergence of all these technologies. They were born before the digital era. यानी उन्होंने अपने जीवन के लेटर स्टेज में इन टेक्नोलॉजीज को यूज किया है, लेकिन स्टिल दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट। वो यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, वो यूज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सोच के देखिए, आपके घर के ही बड़े बुजुर्ग किस तरह से इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, कैसे हमारे जो those who are in the verge of retirement, still they are using all these technologies in a very good manner. ठीक है? Second, we are having digital natives, means this group stands in the middle. They are witnessed the transition into the digital age, कि उन्होंने ट्रेडिशनल चीजों को भी यूज किया और अब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को भी यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, they love to read newspaper, they love to read books, they love to write down each and everything in their register. लेकिन जो डिजिटल नेटिव्स हैं वो कभी कभी तो रजिस्टर पेन और ये सब यूज करते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी यूज करते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि हमको किसको पढ़ाना है। ये एआई लेसन प्लान और हम ये जितनी भी टेक्नोलॉजी को यूज करना है, किसके लिए यूज करना है? फॉर दिस जनरेशन, एंड दिस इज वेरी स्मार्ट जनरेशन। दे आर डिजिटल इनहेबिटेंट्स, mean this is the youngest group, sometimes called true digital children. They have grown up and surrounded by the technology, smartphones. आज भी आप में से बहुत सारी मम्माज होंगी जरूर, बच्चों को नहीं खाते हैं पीते हैं तो उनके लिए मोबाइल पे राइम्स लगा दी जाती हैं, उनके मोबाइल पे गाने लगा दिए जाते हैं। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना मोबाइल या बिना कंप्यूटर के खाना भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह की जो जनरेशन है, इस जनरेशन के लिए जब आपको कंटेंट तैयार करना होगा, तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन क्रिएटिंग दैट कंटेंट? क्योंकि फॉर देम डिजिटल टूल्स आर नॉट वेरी न्यू स्किल टू लर्न, they because they are the extension of their everyday life, these using these equipments. तो इसलिए इस जनरेशन को, अब आप देखिए ये इतनी छोटी सी जनरेशन, देखिए कैसे हर चीज को वो क्या है, मोबाइल सोचते हैं कि ये मोबाइल है। तो इस तरह की जनरेशन को पढ़ने और पढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ lesson plans, how we can integrate these AI tools in our teaching and learning process. Yani adaptability of the younger generation. One defining feature of the younger generation is their remarkable adaptability. ये जो बच्चे हैं, ये जो आज की जनरेशन के हैं, ये क्या है, इन्हें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने में। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मीन्स for this generation, how we should create our content, कैसे हमें अपनी लेसन प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हमें 21st सेंचुरी की जनरेशन को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम आते हैं, जो हम बात आपसे कर रहे थे कि ये जो जनरेशन है हमारा, एक्चुअली में जो कंटेंट होता है, एक्चुअल में हम जो इन चीजों को वो करते हैं, so for this generation, what type of content we need to create, what type of lesson plans we need? अब एक क्वेश्चन फिर से आप लोगों से है कि do you feel any difference in your classes before 5 years? और अभी आप जो पढ़ा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो भी गया होगा, अगर 5 साल का तो एक्सपीरियंस हम मान के चल रहे हैं, आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता, स्पेशली आफ्टर कोविड?
क्या कोई अपनी क्लासरूम में अपने पढ़ाने के तरीके में अंतर दिखता है? Yes, ma'am. Okay, can you tell me that difference? So obviously, ma'am, you have also mentioned that students have got access to a lot of things right now. So many a times they are, ahead of us when it comes to, obviously, or not all the students, but there are certain students who learn new things and they come to the class. So we have to be on the toes. So they have got access to a lot of resources which Yeah, were not there. And very because of advent of this online mechanisms, a lot of webinars are happening, a lot of online coaching or courses are available. So students are generally ready, because I'm from engineering background, so I can okay. tell about my domain. So a lot of students are already aware of a lot of things that we are generally going to teach in the class. So they are Yeah. already on the toe. So when we are giving them projects, so they are doing a lot of good projects on the basis of learning that they are having Various tools. from different resources. Okay, okay. Very right, Praveen ji. And this is very true, because educating this generation alpha is very different. You need to be updated yourself. If you are not updating yourself, it will be very difficult to survive in between this generation. Because for teachers and for educators, this present means this particular generation is very different kind of generation, and to teach them it is very challenging also. Yes, Yes, it is yeah, that one more point. Sorry yeah, to interrupt. yeah, One more point, their attention span has reduced. So yeah. what it used to be there for earlier generation, these people, they get distracted very soon. So they have to be, always told something new, or they have to be, we always have to come up with something, interesting to keep the class engaged. Yeah. Very true, very true. Because this attention span is very challenging these days. Earlier, whenever we were developing videos, and it was told by the UGC and even in NCRT that we need to produce approximate about 3 hours videos. After some time, they reduced that time. They said that it should be only of 2 hours, then 1 hour, then 15 minutes. Then nowadays they are saying that just create only 1 minute reels, Shorts. Yeah. shorts. So time is changing, and according to this change, according to the need of the hour, we also need to create our lessons. अब इन लेसन्स को बनाने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज दिस जनरेशन अल्फा, और वी कैन से दिस नॉट जनरेशन अल्फा, नाउ वी आर हैविंग जनरेशन बीटा. और ये जो जनरेशन है, इसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए हमको बहुत अलग तरीके से सोचना पड़ेगा. Because generation alpha will shape the future of technology, culture, society. The way we educate them today will decide how they use technology tomorrow, whether as a tool for progress or as a distraction. तो अब यहाँ पे हमारा जो प्रश्न था कि हमें लेसन प्लान में कैसे इन चीजों को वो करना है, कैसे पूरी चीजों को करना है. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज LO and LO, that how we will start creating this these lesson planning. अभी हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है, there should be no gap between learning objectives and learning outcomes. If there will be gap between learning objectives and learning outcome, then it means students have not achieved whatever we want. तो यहाँ पर इसके लिए, यानी whenever we are starting this work, creation of the lesson plan, तो हमने आपको जो सबसे पहला काम दिया था, वो हमने कहा आपसे कि you need to write a title. Then you need to convert that title into a catchy title. Why I told you to convert it into a catchy title? Again, जो प्रवीण सर यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका अटेंशन सीक करने के लिए, क्योंकि वो टॉपिक देखते ही कहेंगे whether I should turn these pages in online or not. हमें ये करना भी है, देखना भी है कि नहीं देखना है. और ये सारी चीजें जब हम लोग मूव्स बनाते हैं, ई कंटेंट बनाते हैं, वहीं पे समझ में आ जाता है कि हमारे व्यूज कितने हो रहे हैं, हमारी चीजें कितनी हो रही, कौन देख रहा है हमारे वीडियो. बच्चे कहते हैं यस यस मैम, आई हैव सीन दीज वीडियोज, आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट. लेकिन हमारी लर्निंग एनालिटिक्स सारा बता देती कि बच्चा कितना
उसको देख रहा है और कितना नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसको बिकॉज नाउ वी हैव टाइम फॉर ब्रेक ऑल्सो, बिफोर दैट आई एम गिविंग यू वन टास्क कि हमको करना क्या है, कि because we will create one lesson plan और वो tools के through हम, before that just write down your catchy title, whatever you have taken that you will use that title, you will create your lesson plan on that title. Now you have to write the learning objectives of that particular title. अब इसको ये मान के चलेगा for the duration of 1 hour I will create this lesson plan. ठीक है, तो अब आप उसका जो सेकेंड पार्ट है उसको लिखिए कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज टुडे आई एम गोइंग टू टीच माय स्टूडेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी 30 मिनट की क्लास है और हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए बच्चों ने, हमने ये ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि टुडे आई विल टीच टू माय स्टूडेंट्स अबाउट द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या, ये सारी चीजें अगर मान लीजिए हमको बतानी है। लेकिन अगर हमारी क्लास में किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसका आउटकम हमारी क्लास में नहीं आए, यानी हम उनको ये बताने में सफल नहीं हुए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, उनके अधिकार क्या है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो हमारा पढ़ाना बेकार हो जाता है। यानी हम क्या हो गए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन वाले उस पे आ जाते हैं। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विद इन दिस आवर और विद इन दैट ड्यूरेशन विल आई बी एबल टू अचीव द लर्निंग आउटकम ऑफ माई चैप्टर और नॉट। हमारे लेसन प्लान का जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स लेके हम चल रहे हैं, हम उसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप सब लोग इसको लिखिएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ओनली 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर चैप्टर, ठीक है, जो लेसन प्लान का आपने टॉपिक लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा, डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम, कि क्या हम इस फोटोज के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। Now, after that, I will give you some tools also. Through those tools, how we can integrate our things in our lesson plan. Because here I'm talking about the lesson plan means digital lesson planning, or even you can use that lesson planning in your offline classes also, in your MOOCs also, in your e-content also, everywhere. So we will do those activities after the break. Will it be okay for a break? 10 minutes of break we will take. And after that, again, we will interact in this topic. Ma'am, can you please repeat the work because there was some network issue. I was not able to hear the task. Task, just I'm saying you have written about your lesson plan topic. Okay? Yes, ma'am. I have already written. And then I told you to convert your topic into a catchy title, not in a simple manner. Okay? Okay, ma'am. And after that, write objectives of the topic. Okay, what Learning content, objectives. Okay, ma'am. yeah, what content you will cover within 1 hour. We will make 1 hour of lesson planning. Okay? Then Okay. how much Okay, ma'am. content you will cover in that? Write objectives, learning objectives. And Thank then you, ma'am. Thank you, sir. after 15 minutes, we will come back and then again we will start. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Okay.
Okay, let's start again. Yes, ma'am. Okay. So I was talking about the lesson planning, and you all have written your objectives also. Now we will do one activity, and what you need to do in that, because before starting any of the work in our classroom, suppose in your offline classroom, suppose you are teaching for the first time in your classroom, तो सबसे पहला आप क्या करते हैं, यू नीड टू नो अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, आप किसको पढ़ाने जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या है। तो आप थोड़ा सा एक इंट्रो लेते हैं, ठीक है। सपोज यू आर डूइंग द सेम थिंग इन ऑनलाइन क्लासरूम, हाउ यू विल डू द इंट्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या आपके पास कोई ऐसा कोलैबोरेटिव टूल है या कोई एक ऐसा वो है जिससे आप ऑनलाइन, you all are approximate 327 है, क्या कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग 5 मिनट के अंदर अपने जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके बारे में जान सकें, कहाँ से हैं, कौन है, क्या है, और कौन से टॉपिक पे हम लेसन प्लान बनाएंगे। इज देयर एनी टूल? इफ यू नो प्लीज शेयर, जस्ट लेट मी नो कि हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन चाहते हैं, बताइए कैसे हम करेंगे उसको। गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म, बट 5 मिनट में तो पॉसिबल नहीं होगा। एनी अदर थिंग? और हम मैम एक पोल दूसरे कर के सकते बारे हैं। में जान भी सकें। यस, हाँ जी मैम। व्हाट्सएप पोल मैम। व्हाट्सएप पोल, पोल कर सकते हैं मैम। व्हाट्सएप पोल में हम लोग बहुत सारी चीज नहीं जान पाएंगे। हम मान लीजिए हम जानना चाहते हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट वुड बी योर टॉपिक ऑफ लेसन प्लानिंग, ये सब हम जानना चाहते हैं और उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहते हैं, तब हम क्या कर सकते कोई हैं? इंटरेक्टिव टूल मैम हम यूज कर सकते हैं, लाइक मेंटीमीटर, जिसमें हम डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे और हमारा आंसर लाइव लेकिन उसका दिखेगा हम रिकॉर्ड नहीं रख क्लाउड। पाएंगे मैम, रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे। एनीथिंग एल्स? Ma'am, in Google form, we can also have the record, na? From which email ID we had लेकिन गूगल submitted. फॉर्म विल टेक टाइम, है ना। अगर हम उसको बनाएंगे फिर हमें उसमें वो कर, तो वो टाइम टेकिंग होगा। हमने कहा 5 मिनट के अंदर हम चाहते हैं, तो लेट्स डू दिस एक्टिविटी, करके देखते हैं, ठीक है। क्यों? कि हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कौन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम गोइंग टू डेवलप दिस लेसन प्लान फॉर ऑल ऑफ यू, और हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है उस पे, ठीक है। तो चलिए हम, आई हैव शेयर्ड वन लिंक विद यू, जस्ट लिसन द इंस्ट्रक्शंस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अभी ये हमने आपको एक लिंक शेयर किया है, इस पे क्लिक कीजिएगा, एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन इट यू विल सी दिस। एक मिनट, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये विंडो दिखाई देगा। Yes, on Padlet, I have used this. Yeah, Padlet. हाँ, वेरी गुड, Collaboration. इफ यू हैव यूज दैट इज वंडरफुल। अब हम इसको यूज करेंगे। हाउ यू हैव टू यूज इट? क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, in subject write intro, introduction, and here in this box you will write your name, institution name, and the topic of your lesson plan, catchy topic of your lesson plan. Just I'm giving you 2 minutes to do this activity, and after writing all these things you will click on camera. जैसे ही आप कैमरे को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैमरा ओपन हो जाएगा, और उसके बाद अपनी एक स्माइली बढ़िया सी स्माइल करते हुए फोटो खींचिए, सेव करिए, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन पब्लिश और सबमिट। Now start doing this activity. You have 2 minutes to do this activity. And from where you had opened this link? I have shared it in chat box. No. That link I had opened and login through the Google. Gmail. Yes, Log in through after Gmail. that. After that, there you will see one plus sign there. Okay, from the post. Yeah, post, plus post. Okay, click on that. I hope you all have, you all are able to work on it. Yes, now I can see that you all are writing.
Write your name, your institution name, and your topic of lesson plan. And then click your photograph. And after clicking photograph, submit it. After clicking photograph, and then submit it. Now, those who are posting their details, you can see on a screen also. But you all are not clicking your photograph. Click your photograph also. Many of you have written. Ma'am, while Zoom meeting, it is not allowing, I guess. मैडम लिंक Because लिंक Zoom ओपन meeting नहीं चल हो रही रहा है ना, है. तो allowed नहीं हो रहा photo click. No, you click on allow. It will ask you to allow, then you click on allow and then see. Dr. Joshua Roy, he has done it. He has clicked his photograph also. Now, those who are working on it, you can see them on a screen also. This is very interesting tool. You can use it for in developing lesson plan. मैम हो नहीं पा रहा. ट्राई करिए, अगर अभी नहीं हो रहा है आप बाद में भी कर सकते हैं. आप इसको जीमेल अकाउंट से लॉगिन करिए. मे बी कि आपके उसमें ये साइन अप ना हो. आप साइन अप करिए थ्रू जीमेल एंड देन कुछ हो ही नहीं रहा मैम. जिसके में नहीं हो रहा है आप बाद में थोड़ा वो कर सकते हैं. इसको ट्राई करिए. देखिए इतने सारे लोगों ने कर लिया. इट मीन्स दैट लिंक इज वर्किंग. Nice. Many of you have already done. Now you can see this Padlet form is full now. Yes. Now time is over. Now you can see that with this collaborative tool, what we have done. अब हम इसको अगर इसका स्लाइड शो भी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं. किसी का माइक ऑन है, प्लीज स्विच इट ऑफ. डॉक्टर लंका सुजाता. Dr. Lanka Sujata, your mic is on. Okay, thank you. Now see, those who have filled this form, this Padlet, you can see yourself. कैसे आपने जो दिया, आपकी details हमारे पास आ गई. Now I can save this as PDF also. I can send it to you all also. And all together, you all
may be aware that how many participants were there, what was their topic, and all these things. See. Okay. Now, this was all about a collaborative tool which we are using in creating the lesson plan. कि एक हम इस component को अपने online lesson plan और उसमें डाल सकते हैं. Okay. Now, again, I am coming to that part, lesson planning. कि AI tools का हम lesson plan में कैसे use करें. Now, you have written about your topic, you have converted it into catchy topic, and then what you did, you have written your objectives also. ठीक है. अभी next हम क्या चलते हैं कि lesson planning actual में है क्या. पहले हमें ये पता होना चाहिए. क्यों? Because it is not necessary that everyone of you have done B.Ed या आपको इसका formal detail पता हो. तो लेसन प्लानिंग की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो लेसन प्लानिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जो प्लान कर रहे हैं एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि इन माय ऑनलाइन क्लासरूम और इन माय ऑफलाइन क्लासरूम व्हाट आई विल डू. और जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम एजुकेशन में देखें तो वो लेसन प्लानिंग में बहुत ज्यादा होती है. मींस AI can now assist teachers in designing lessons that are data informed, goal oriented or tailored to the unique need of every learner. तो अब हम बहुत ज्यादा घंटों टाइम लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, मींस instead of spending hours in creating plans from scratch, teachers can use AI tools to generate lesson outline, suggest learning activities, design assessment, and even recommend resources aligned with the Bloom's taxonomy या कोई भी टेक्सोनॉमी जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो इसलिए AI इन लेसन प्लानिंग क्या है, that is transforming the way educators plan, organize and deliver learning experiences, making teaching more efficient and more meaningful. यहाँ पे जो हम लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, आप देखिए जो आपका ये स्लाइड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हमने कि लेसन प्लानिंग इज बोथ exciting and exhausting also. क्योंकि exhausting क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें जितनी भी चीजें करते हैं वो सिस्टम से करते हैं. 1 मिनट का टाइम किल नहीं करते हैं कि हमारा आधा घंटा हमारे पास है तो हम आधे घंटे में कैसे पढ़ाएंगे, 1 घंटा है तो कैसे पढ़ाएंगे. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट exhausting also. So it is like preparing a road map for learning, deciding what to teach, how to teach and how to know if learning actually happen. हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही, मींस जो जिनको हम पढ़ा रहे हैं. सो बिफोर वी एक्सप्लोर हाउ AI हेल्प्स, लेट अस रिकॉल द बेसिक स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग. हमें ये तो पता हो कि हमारे लेसन प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं. और तो बेसिक स्टेप्स को हमें जानना बहुत जरूरी है कि लेसन प्लानिंग में क्या होता है. अभी आपने बेसिक स्टेप का पहला पार्ट किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिसाइडेड अबाउट द टॉपिक, और जो इसका पहला स्टेप है वो क्या है कि सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए नाउ टेल मी what type of tools you have used. आपने अपने आप लिखे या आपने चैट जीपीटी या कोई AI टूल यूज किया, बताइए मुझे. चैट जीपीटी के अलावा आपने अगर कोई टूल यूज किया हो तो जस्ट लेट मी नो. If you have used any other topic other than this chat GPT, please write in chat box. Notebook LLM. Notebook LM, okay. Anything else? For Gemini. writing, you have used Notebook LM. Element. Please, sir. Yes, please. Gemini. Gemini, yes. Anything else? Claude AI. Claude AI. Grok, Gemini, Copilot, Claude. ma'am. Copilot, ma'am. Copilot, okay, good. Copilot. Gamma AI, why you have used DeepSeek, Gamma? Gamma is to DeepSeek, ma'am. create presentation. Okay, good, good.
Meta AI. Meta for writing objectives, why you have used Meta AI? Okay, means most of the tools are common which you have used for writing objectives. Now see, for writing objectives, what type of tools you can use. Okay, now if you are writing, now you can see these tools also, means you can use ChatGPT, Copilot. Already you all have used. None of you have written about the tools like Lesson Lab AI. Try these tools also, because we are not having much time. Otherwise, we could do activities also. You can note it down. LessonLab.ai, QueryPod. This also you can use. Okay. Now, next part is second step of lesson planning is selecting content. Okay, selecting content. Now, before telling you about this selecting content, suppose we all are doing one collaborative work. अगर हम सब मिलके कुछ काम को कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 300 के ऊपर बैठे हुए हैं और हमें कोई कंटेंट इकट्ठा करना है। मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम एक किताब लिखना चाहते हैं। हम एक किताब लिखना चाहते हैं, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आया है और हमने कहा कि हमारी ये जो पॉपुलेशन, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी है, हम चाहते हैं कि आप ही में से हम फटाफट कहें कि आप हमें अपना मतलब अगर आप लोग कोई सहयोग करना चाहें बुक चैप्टर लिखने में तो करते हैं। तो हम कौन सा टूल जल्दी से यूज कर सकते हैं बताइए। मान लीजिए हम एक किताब लिख रहे हैं और हम चाहते हैं आप ही में से हमारे बुक राइटिंग में चैप्टर्स को लिखने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ें और चैप्टर्स लिखें। तो हम मिलके हम चाहते हैं हम 5 मिनट के अंदर आपका वो ले लें, आपसे ले लें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम आपसे लिखवा लें कि आप ये चैप्टर लिखेंगे, ये चैप्टर लिखेंगे। सपोज हमारी बुक का नाम है AI इन एजुकेशन। हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं उसके लिए? मैम वी कैन यूज गूगल शीट। We can use Google Sheet. Very good. और तो करके देखें इसको। मान लीजिए हमें लेसन प्लान का कोई कंटेंट बनाना है एंड आई एम डूइंग दिस फॉर एन एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे AI इन एजुकेशन पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको एक लिंक शेयर कर रहे हैं। विद इन नो टाइम जस्ट ट्राई टू राइट योर डिटेल्स कि देखें कितने लोग कितनी जल्दी उसमें अपनी डिटेल को फिल करते हैं। जस्ट गिव मी कुछ सम सेकेंड्स, आई एम राइटिंग दैट। हम आपके साथ लिंक शेयर कर रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट, वेयर इज दैट लिंक? My screen is not visible. Just let me know. No, ma'am. Oh, No, ma'am. okay, okay. Now again, I have shared one link with you all and I have invited to create content in the form of book for lesson plan or for e-content। तो अब देखें आप में से कितनी जल्दी कौन इसको करते हैं और इसको हम शो भी कर रहे हैं इसमें। Now this is the link and I have shared this link। चलिए, now start writing। हमने चैप्टर इसमें लिख दिए हैं, चैप्टर का हमने टॉपिक लिख दिए हैं एंड आई हैव गिवन द ऑप्शन टू राइट ऑथर्स नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर। चलिए जल्दी से भरिए इसमें, जो आपकी चॉइस हो इसमें से आप उसमें इसको भरिए। यू कैन सी दिस ऑन स्क्रीन ऑल्सो। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट।
दिस इज कोलैबोरेटिव वर्क। देखिए कुछ लोग गड़बड़ भी कर रहे हैं कि दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम लिख दे रहे हैं। डोंट डू लाइक दिस, सिर्फ अपने वाले उसमें लिखिए। मेरा ओवरराइट हो गया मैम, 4th चैप्टर। ओवर राइट हो गया है, किसी ने ऑथर्स नेम ही गायब कर दिया है। हाँ हाँ ऐसे कर नहीं दिया कर, मैम। कोलैबोरेटिव वर्क में एक ये गड़बड़ हो जाती है। देखिए पूरा वो ही गायब कर दिया। नो नो नो, दिस इज नॉट फेयर। यहाँ पे हम एक और वो बना देते हैं। Actually मैम we can also monitor who is changing what. That is also a thing that is वो तो available. आपको दिख गया कि कौन किसने इसका पूरा ऑथर नेम लिस्ट ही गायब कर दी। मे बी हाँ अनइंटेंशनली किया है, लेकिन हाँ फिर भी जब हम कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं तो हमें थोड़ा सा इसमें वो रहना चाहिए। yes मैम। मैम तो अगर the better way is again use a form link itself. फॉर्म लिंक में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आ गया। वो हो जाता है, लेकिन जब हम बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो हम उनको सिखाते हैं कि यस मैम। कोलैबोरेटिव में अगर हम हैंड होल्डिंग अच्छी नहीं करेंगे, बिकॉज इन कोलैबोरेशन 1+1 इज ऑलवेज 11, और उनको हैंड होल्डिंग नहीं सिखाएंगे तो इसका मतलब है कि हम आपस में मिल के काम नहीं कर सकते। हायर एजुकेशन टीचर्स को तो पेपर लिखने से लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट सब कुछ करना पड़ता है। तो अब आप में से ही कोई इसमें एक कॉलम और बनाइए और उसमें लिखिए ऑथर्स नेम। यहाँ पे any one of you can add one column and yes, write author's name. Very good. बस एक किसी ने लिख दिया, that is sufficient. मीन्स दिस इज वेरी गुड एक्टिविटी। इसमें हम जितना क्विकली करते हैं उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाएगा हम इसमें इसका एडिटर मोड बंद कर देंगे। Ma'am, to avoid this, we can announce name of particular student or particular person to do one activity, so that we can avoid. Yes ma'am, but this is a challenge, right? First come first serve कौन Yes. कर रहा है, तो We have to that was the monitor and challenge. announce every time that do this. Yeah. अभी क्या है, कई बार क्या होता है, बिकॉज मे बी कि सम ऑफ द टीचर्स आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम बहुत हैबिचुअल नहीं होते, कुछ लोग हम लोग बहुत हैबिचुअल होते हैं, फटाफट काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं होते हैं तो गलती से भी ये हो जाता है। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। आप सोचिए हम उनके साथ इतना कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन वहां पे ये नहीं है कि वो हमको मेल भेजेंगे फिर हम उनको जवाब देंगे। वो इसी तरह की शीट तुरंत इसमें अप्लाई करते हैं और हम लोग तुरंत तुरंत उसमें जवाब देते हैं कि हमने अपना जो हमें लेक्चर देना है, हमारी ये ड्यूरेशन है, ये टाइम है ये, और उस काम को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर वो बार बार करें तो सोचिए कितना टाइम लगता है कि मेल देखा नहीं देखा, आया नहीं आया, इस तरह से। ओके, तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क। अब हम नेक्स्ट उसी पे आते हैं जो हम आपको बता रहे थे कि सिलेक्टिंग द कंटेंट। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने टॉपिक लिया, ऑब्जेक्टिव्स लिखे, उसके लिए एआई टूल्स यूज किए। अब हमने कंटेंट को सिलेक्ट किया। जो कंटेंट सिलेक्ट किया है, कंटेंट में हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये चैप्टर लिखना है, ये करना है, वो करना है। तो उसके लिए हम इस तरह के बहुत सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें अब फिर से हम आगे आते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, चूजिंग टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज। अभी क्या करते हैं कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस डिजिटल लेसन प्लानिंग, तो सबसे पहला काम क्या होता है, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में एक चार्ट दिखाया था, उसमें मूक और मूक के क्वाड्रेंट लिखे थे और ई कंटेंट और उसके क्वाड्रेंट लिखे थे। इन आर AI based lesson planning also, generally we should focus on 4 quadrant. 4 quadrant में क्या होता है, first quadrant is related to, first of all I told you to write your title, catchy title, then objectives, and after that you need to write about your learning audience, about your
all the details for how much duration you will make it. If you are making it very big e-content, then how much credits will be there, each and everything you will write. Now, first quadrant will be based on choosing the content or selecting the content in this particular format. What you need to do, you need to prepare a text material, means only and only text material. Okay, means approximate 3000 words you will write. It depends on your duration. Suppose you are developing one content और हमने 1000 शब्दों का टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है, हमने CNS के बारे में लिखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं. आई हैव रिटन अप्रोक्सीमेट 1500 text material words text material for my student. Now let me know, will your students will take interest in reading that material? अगर हमने text format में लिखा है तो interest लेंगे बच्चे? No, ma'am. No, ma'am. वो कहेंगे ये टेक्स्ट मटेरियल कौन पढ़े क्या, वो लोग 2 लाइन भी नहीं पढ़ेंगे. तो अब हम AI बेस्ड लेसन प्लानिंग बनाने में हम क्या करेंगे? नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी विल कन्वर्ट इट इनटू वेरियस अदर फॉर्मेट्स. ठीक है, हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, हमने 1500 का टेक्स्ट मटेरियल लिख लिया. नाउ व्हाट वी विल डू, अभी इसको हम करके देखेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे कि जो हमने 1500 शब्दों का टेक्स्ट मटेरियल लिखा, उसमें से out of that I will select some content to convert it into the infographic, and after that some of the content I will select to create video. After that I will select some content or some subtopics to create presentation. Again I want my students to learn through music. तो हम क्या करेंगे, हम एक म्यूजिक बना देंगे छोटे से टेक्स्ट का. अब देखिए, जो आपने कंटेंट सेलेक्ट किया था वो आपका कन्वर्ट हो जाता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल. मींस you have converted it, text material into various other formats, that is self learning material. Okay, क्लियर है इतना? तो हमारा जो लेसन प्लान बन रहा है, जो ऑनलाइन कंटेंट हम बना रहे हैं, उसमें हम बहुत सारी चीजों का यूज कर रहे हैं. तो चलिए फिर से एक एक्टिविटी करते हैं. यहाँ पे हम आपको बताते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल, अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ, फिर से हम एक लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ये हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे. हमने आपसे कहा कि टेक्स्ट मटेरियल बच्चों को पसंद नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? एक मिनट. हाँ, अब ये एग्जाम्पल देखिएगा. मान लीजिए हमने ये टेक्स्ट मटेरियल लिख दिया पूरा, और टेक्स्ट मटेरियल लिखने के बाद हमने कहा बच्चों पढ़ो. बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ब्लेंडेड लर्निंग की हम डेफिनेशन उन्हें पढ़ाना चाहते हैं. बच्चे कहेंगे ओहो, ये तो दिमाग में भी नहीं घुस रहा है, हम इसको कैसे याद करें ये. तो अब क्या है, ई टेक्स्ट को सेल्फ लर्निंग मटेरियल में हमें कैसे बदलना है? अगेन आई एम शेयरिंग वन लिंक विद यू ऑल. एक मिनट, जस्ट गिव मी सम टाइम. हमने देखिए, आपको एक लिंक मिला इसमें. नाउ क्लिक ऑन दैट लिंक. क्या हुआ देखिएगा, जो लिंक आपको हमने दिया उसको क्लिक आप करेंगे तो क्या हो रहा है उसमें? एक मिनट. हमने आपसे कहा था कि ब्लेंडेड लर्निंग की डेफिनेशन पढ़िए. आपको बिल्कुल आनंद नहीं आया क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में था.
फिर हमने क्या किया, आई हैव कन्वर्टेड दैट टेक्स्ट इनटू द सेल्फ लर्निंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ गेमिफिकेशन। ठीक है, हमने कहा कि आपको नाउ यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, क्लिक ऑन दिस व्हील, स्पिन व्हील है, इसको क्लिक कीजिए और ब्लेंडेड लर्निंग की डेफिनेशंस को लर्न कीजिए। अब देखिए जैसे ही क्लिक हुआ और जहां पे वो रुका, उसने ब्लेंडेड लर्निंग की एक इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन दे दी, तो बच्चा इसको पढ़ना पसंद करेगा। ठीक है, इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट टेक्स्ट मटेरियल इनटू द गेमिफिकेशन। इसी तरह से फिर से हम व्हील को टर्न करेंगे तो हमें नेक्स्ट डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन वो देगा। Means blended learning allows students to learn partly in class and partly through online content. तो इस तरह से अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे हमने गेमिफिकेशन के। अब देखिए हमने यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन। आप भी इसी तरह का कोई गेम बनाना चाहें तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट इन द सेम मैनर। आप कोई भी कंटेंट इसमें डालिए और अपना एक गेमिफिकेशन बना लीजिए। ओके, तो अब हम फिर से आते हैं उसी में कि हम बात कर रहे थे आपसे यहाँ पे लेसन प्लानिंग की। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेसन प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखने के बाद सिलेक्टिंग द कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे अब नेक्स्ट। उसमें हमने बताया ना आपको, आपने ई टेक्स्ट लिखा, आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, choosing teaching methods and learning activities। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने कहा टेक्स्ट का हमें क्या करना है, अलग अलग वो करना है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। अब आप हमको बताइए कि आप और क्या चीजें यहाँ पे पसंद करेंगे अपने टेक्स्ट को बनाना। एक एग्जाम्पल हमने बता दिया, गेमिफिकेशन। अब और क्या बनाना चाहते हैं आप बताइए। यस, वेरी गुड, यू ऑल आर शेयरिंग इन चैट बॉक्स। Is it feasible in PG teaching? It depends on your content. It depends on your topic. आप PG, UG किसी के लिए भी इस कंटेंट, देखिए मूक्स जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इस तरह के चीजों को करते हैं। क्यों? क्योंकि आज चाहे PG का विद्यार्थी हो, चाहे UG का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, सभी का स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम हो गया है। That is why we are using these kind of gamifications also to make them learn. Okay? ओके, अभी आपने कहा यस वी कैन यूज इन्फो फॉर इन्फोग्राफिक, वी कैन यूज नैपकिन AI। वेरी गुड, नैपकिन एक AI के थ्रू हम इसी ब्लेंडेड लर्निंग के कंटेंट को और क्रिएटिव बना सकते हैं। किसी भी कंटेंट को वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द विद इन इन्फोग्राफिक, एनीथिंग है। चलिए अब हम आपको एक चॉइस देते, एक ऑप्शन देते हैं हमको अपने कंटेंट में कि हम CNS के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में वो कर रहे हैं। तो क्या हमारे उसको हम छोटी सी एक पोयम बनाना चाहे। मान लीजिए हम छोटे बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट तक के बच्चे, इवन बड़े बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं म्यूजिक को। Suppose I'm going to teach this particular content CNS to my graduates या undergraduate students, और हम चाहते हैं कि एक सुंदर सी पोएम के फॉर्म में वो इस कविता को वो करें। ठीक है, इस कविता के फॉर्म में इस पर्टिकुलर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़े। तो डू यू नो एनी टूल रिलेटेड टू इट कि आप तुरंत उसमें एक पोएम क्रिएट करें और उसका लिंक बच्चों को दे दें। एनी ऑफ यू, एनी गेसेस? वेरी गुड, सुनो AI, बहुत बढ़िया। एनी अदर टूल? चलिए लेट्स ट्राई सुनो AI। इसको आप लोग जिसने नहीं सुना है वो सुनिए, इसको करके देखिए, suno.ai। इसको भी हम लोग करते हैं। देखिए हमने एक आपको बता दिया गेमिफिकेशन, एक हो गया हमारा पॉडकास्टिंग के लिए या पोएम के लिए। इसको करके देखते हैं, सुनो AI। क्लिक ऑन Google सुनो AI म्यूजिक, सुनो AI म्यूजिक जनरेटर। Just you need to write the
topic in which you want to create that music. वो लिरिक्स आपके लिए, अभी जैसे हमने खूब सारे बना रखे हैं यहाँ पे, आप इसी में से कोई सा सुन लीजिए. जैसे हमने, नहीं, these are the examples. हाँ, हमने एक बनाया था, जैसे हम बनाना चाह रहे थे वर्तमान ही जीवन शक्ति, इस पे. And I have given that topic only. Here I will write the topic and it will immediately create one poem with music. इसको सुन के देखिएगा. I am sharing the link with you all. आप देखिए आपके उसमें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. And you can also create your music. ठीक है, ये हमने क्रिएट किया. इन द सेम मैनर यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर म्यूजिक. Write the topic here. Okay, very good. It is working. Now you all can listen that. कितना प्यारा सा म्यूजिक बनाता है. Again, you can even do editing also in this. Okay. Now for e-text to presentation, उस पे हमको बताइए. उसके लिए आप कौन कौन से tools use करते हैं for presentation? What type of tools you are using? Ma'am, Canva is there. Canva you can use, or Gamma, yes, Gamma AI, okay. Canva में भी बन जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं बनते. Means you need to create on your own. ऐसे टूल बताइए जिस AI टूल जिसमें अपने आप सब बन जाए. छोटा सा बने लेकिन अच्छा सा बन जाए. बताइए. नोटबुक LM ठीक है. नोटबुक वाला पता चलने लगता है कि हाँ आपने उससे ले दिया. साइड मॉडल, ओके. चलिए एक टूल हम बताते हैं आपको. चलिए आइए लिखते हैं. नेक्स्ट टूल दैट इज Chalky.ai. Chalky AI lesson generator for teachers. AI, click on it. अभी हम मैम का ही टॉपिक लेते हैं. हमने कहीं लिखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैम. हाँ. नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हम एक लेसन चाहते हैं. नाउ तो गाँव में भी नहीं होता है. किसके लिए चाहिए? Means for adult learners I want to make it. Continue. क्लासरूम में कैसे कितने डिस्टर्ब हो रहे होंगे. Even if you want to, ये learning objectives भी आपके देगा because it is creating lesson for you. ठीक है, तो आप अपने पूरे टॉपिक से या एक कंपोनेंट को ले सकते हैं. Continue. And there are many templates also. If you want to choose any from here, you can choose. For example, suppose I have taken this template. Click on generate. The central nervous system, the biological component center of human life. उसने टॉपिक को बहुत अच्छा पता हो रही है पे आना कि पता हो रही है उनका.
ये अब मैम देखिए, आपने जो टॉपिक लिया था कैसा टॉपिक है, कैसा बना है? कुछ नहीं किया, केवल हमने क्या किया इसमें, केवल हमने टॉपिक दिया और उसने सब कुछ खुद क्रिएट कर दिया है। ठीक है, now you can do also in this, you can replace photographs also, whatever you want you can do. Now because you are using particular in your lesson planning, so if you want to add some activities you can do that also. Suppose I want to add some activities after this slide. Okay, ठीक है। मैं मीना मैम कैसा बना है ये पीपीटी? सब चीज बहुत बढ़िया से। असल में इन लोग को माई ने डांटा है कि जब लोग जाएं तो खाने की जरूर पूछना है। यूसुफ आप उसी के आपने खाला क्या होगा? अनिसुर रहमान जी आपका माइक वहाँ ऑन पे है, बच्चे प्लीज हैं ना, बंद कर चलिए मैं लीजिएगा। पैदल ही चल रहा हूँ। रहमान जी आपका माइक ऑन है, कर दीजिए। कौन सी फ्लाइट? अब देखिए मैम, इसी में because this is your presentation and it is based on your lesson planning. Suppose you have taken one small component of your lesson plan and you have generated this particular presentation. आप क्लास में एक्टिविटीज भी चाहते हैं कि ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ एक्टिविटी भी करें इससे रिलेटेड। नाउ यू कैन ऐड एक्टिविटी आफ्टर दिस स्लाइड, या जिसमें भी उसके बाद आप एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं ऑन ऐड। अब ऐड एक्टिविटी में वट एवर टाइप ऑफ एक्टिविटी यू वांट यू कैन ऐड। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, इमेज मैचिंग। सपोज हम ये ले लेते हैं, इमेज मैचिंग, मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई वांट एंड अस्सलाम वालेकुम। has added match the words with the picture। वालेकुम अस्सलाम। और नेक्स्ट स्लाइड में इसने आंसर दिया। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो। देखिए किसका वो है, डे कौन है, जरा इनकी ऑडियो म्यूट कर दीजिए। होस्ट जो भी हो प्लीज। हाँ, अब ये पूरा लेसन प्लान आपका कितना अच्छा बढ़िया बन गया। देखिए सारी चीजें जो आपको चाहिए थी वो आ गई। यू कैन डू एडिटिंग ऑल्सो इन दिस। नाउ आफ्टर दैट डायरेक्टली यू कैन शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स ऑल्सो लाइक दिस। व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, जहाँ चाहे वहां आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इवन यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो, यहाँ से एडिटिंग हो जाएगी। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपना नाम लिख सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। और एक्सपोर्ट करना चाहें एज पावर पॉइंट तो यू कैन एक्सपोर्ट ऑल्सो एज पावर पॉइंट, एज गूगल स्लाइड, एज पीडीएफ। प्रेजेंटेशन, लेसन प्लानिंग का प्रेजेंटेशन पार्ट कि आप कैसे इसको वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फिर से इसमें आते हैं कि चूजिंग टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्टिविटीज। हमने क्या किया, लर्निंग एक्टिविटीज भी ऐड कर दिया। आई हैव एडेड presentation also, I have added podcast also, I have added infographic also, can use napkin। आप लोगों ने किया है ना सबने? उस कमरे की है। AI हाँ, वेरी और डिस्टर्ब। वहां पे नीचे की पूरा अच्छे से करके कपड़े हटा के, और जो इस कमरे की है वो 3-4 में एक जैसी है, लंबी। जहरा खातून मैडम प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो। जहरा खातून मैम, टेक्नोलॉजी का बस यही वो होता है कि मिट्टी जमी है इस चक्कर में आना है। Now I hope you all are understanding the concept which I am trying to tell you. Okay? अब यहाँ पे हमारा, हमने पहले आपसे कहा था कि हमने कंटेंट सेलेक्ट किया, selecting the content,
After that, what I did means for selecting the content, I have used various AI text material, AI tools for writing text material. After that, choosing teaching methods and learning activities means for changing the text into the various other formats. I have used various types of presentation tools, podcast or audio tools or video tools or infographic, whatever I want, I can use. Okay. एक एग्जाम्पल और बता देते हैं. हाँ, selecting resources and teaching is, if you are taking offline classes, then you can use these things. If you are taking online classes, then also you can use various types of teaching aids. If you want whiteboard, you can use AI tools, you can use various other resources also. एक और चीज हम आपको बता दें यहाँ पे, जैसे हमने में आपको बताया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम किसी होस्ट, थोड़ा सा देख लीजिए ऑडियो जिनका ऑन है उसको या तो बंद करा दीजिए या रिमूव करा दीजिए. उनको नेटिकेट्स कहते हैं, लोग भूल जाते हैं. हाँ, अब देखिए, सपोज हमने एक लेसन प्लान बनाया और उस लेसन प्लान में हम एक छोटी सी स्टोरी भी ऐड करना चाहते हैं. छोटी सी स्टोरी का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक छोटे से बच्चे के बारे में हम यहाँ बताना चाहते हैं, उसकी हमने एक स्टोरी लिखी और हमने कहा द मैजिकल बैग, उसके बारे में कि हम यहाँ पे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं उसे तो हमने रिलेट कर दिया, छोटे से बच्चे की एक स्टोरी डाल दी. अब हमने इमेज बना ली एंड आई होप यू ऑल नो हाउ टू क्रिएट इमेजेस. इमेजेस के लिए भी अगेन वी आर हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स, एआई टूल्स. अब उनके नाम बताइए कौन कौन से आपको पता है. वेरियस टेक्स्ट टू इमेज. चैट जीपीटी तो आजकल खूब चल रहा है, उसकी फोटो को देख देख के मन भी उठ गया है. इतनी सारी चैट जीपीटी की, वो चैट जीपीटी, जेमिनाई, एनीथिंग एल्स. नैनो बनाना. नैनो बनाना, ठीक है. नैपकिन, जेमिनी. ओके, गुड गुड गुड. Please, you all know many tools. ओके अभी हम आपको एक पीपीटी दिखाएंगे जिसमें हमने बहुत सारे टूल्स बताए हैं. यू ऑल कैन ट्राई दोस टूल्स. सपोज हमने एक वो दिया, हमने ये नैनो बनाना से एक फोटो बनाया कि सपोज आई वांट टू ऐड वन वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल क्लिप, स्मॉल वीडियो इन माय लेसन प्लान, जिसमें हम एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल बॉय and he was having a very good, very nice magical bag. ऐसा करके हमने एक वो प्रॉम्प्ट दिया और हमने एक बैग वो बनवा लिया, इमेज बनवा लिया. अब उसी इमेज को हमको क्या करना है, छोटे से वीडियो क्लिप में, जिसमें हम अपनी वॉइस ओवर देके उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दे. बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल my students about the concept, that particular concept in my lesson plan. तो हमने ये बनाया और ये फोटो बनाने के बाद उसी को हमने फिर से प्रॉम्प्ट देके इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट कर. वही कॉन्सेप्ट को हमने जस्ट क्या किया, आगे का थोड़ा सा एनहांस किया और उसी फोटो से हमने ये बना दिया. तो ऑल कैन आल्सो ट्राई द सेम थिंग. कौन से उस पे बनाए, देखिए हमने लिखा हुआ है वहां पे pixburst.ai. Pixburst, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टूल. इसमें आप बहुत सारे वीडियोस बना सकते हैं, सीक्वेंस भी बना सकते हैं, स्मॉल क्लिप्स यू कैन क्रिएट. और ये छोटे छोटे क्लिप्स को क्रिएट करके आप पूरे एक साथ जोड़ के पूरी स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं. इसके अलावा एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टूल है, दैट इज which you can use to create stories, create small videos, create everything. The name of that tool is Lumen AI. LUMEN, Lumen AI.
ये सब हम लेसन प्लानिंग के लिए आपको टूल्स बता रहे हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई वांट टू क्रिएट वन स्मॉल वीडियो ऑन एनवायरमेंट. ठीक है, वो एनवायरमेंट में तो हमने कैची सा टॉपिक उसमें डाल देंगे, वो पूरा हमको. और उसमें एक चीज और है कि अगर हम उसमें नहीं डालेंगे तो वो हमारे फॉरेन कंट्रीज के फेसेस और वो डाल देंगे. इन दैट वी नीड टू गिव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट दैट I want one small story in the form of video in which one dadima in Indian context या in Indian environment is telling a story to her granddaughter or grandson. इस तरह से आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो वो बहुत अच्छा सा आपको पूरा स्मॉल वीडियो बना के दे देगा. यूज दैट लिंक इन योर लेसन प्लान. ठीक है, तो नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इमेजेस, इंफोग्राफिक इमेजेस, पॉडकास्ट. और ये यानी हर चीज के आप एक एक दो दो टूल जान लेंगे, समझ लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. बहुत ज्यादा उसमें मत जाइएगा, नहीं तो क्या होता है, इट विल ऑलवेज क्रिएट कंफ्यूजन. ओनली चूज वन और टू टूल्स, और स्पेशली ऐसे टूल्स को चूज कीजिए जो ओपन एआई में हों और फ्री हों. क्योंकि अगर आपको पेड वर्जन देखेंगे तो पेड वर्जन क्या होंगे, पेड वर्जन आप एक बार दो बार यूज, जैसे गामा को आप यूज कीजिए, थोड़े दिन बाद वो बंद हो जाएगा, आपके पास बहुत क्रेडिट नहीं बचेंगे. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट द चौकी. चौकी इज वेरी इंटरेस्टिंग. वीक में आपको बहुत सारे वो बनाने के ऑप्शंस देता है, वो प्रेजेंटेशन बनाने के. ओके, नाउ नेक्स्ट इज yes, now next is planning assessment. अभी क्या है, हमने बताया यू आर डेवलपिंग लेसन प्लान थ्रू एआई टूल्स. उसमें हम कोलैबोरेटिव टूल्स भी यूज कर रहे हैं. अब हम आते हैं कि हम इन जनरल व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टीचिंग, टीचिंग मीन्स कि वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट आवर लेसन प्लान इन द क्लासरूम. देयर आर थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग. थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग मीन्स प्री-फेज in which you are planning for your lesson plan, कि आप कैसे लेसन प्लान बनाएंगे, किन बच्चों को पढ़ाएंगे, who will be your target group, what would be the duration, कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, mode of instruction क्या होगा, everything. Okay, after that second phase is related to duration during the classroom, interactive phase जिसको कहते हैं, जिसमें हमने का प्लान को हम कंटेंट को सिलेक्ट किया, कंटेंट को डिलीवर किया, कंटेंट को एक्सिक्यूट किया इन द फॉर्म ऑफ वेरियस वीडियोस, ऑडियोज, इंफोग्राफिक, प्रेजेंटेशन, ये सब किया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं पोस्ट एक्टिविटी फेज. मींस वेयर वी आर गोइंग टू अचीव द लर्निंग आउटकम्स. हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे और लास्ट में हमने क्या किया, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, हमने लास्ट में लर्निंग आउटकम्स के को अचीव कैसे करना है, ये हमारा प्लान का नेक्स्ट पार्ट होगा. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लर्निंग आउटकम के फॉर्म में कैसे हमें मिलेंगे उस पे आएंगे. तो अब हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजों को बना रहे हैं, तो इसके लिए फिर से हम ऑनलाइन टूल्स हमें पता होने चाहिए. व्हाई? because now I am going to assess my students, whatever I have taught in my classroom, whether my students are able to know the things or not. ठीक है, हमारे बच्चों को वो चीजें समझ में आई कि नहीं आई, हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम असेसमेंट की प्लानिंग करते हैं. असेसमेंट की प्लानिंग करने के लिए हमारे पास नाउ वी आर हैविंग वेरियस टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं. अब ये टूल्स फिर से आप बताइए कि आपको कौन कौन से टूल्स आते हैं. तो आपको मान लीजिए क्विज करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से अपने लर्निंग आउटकम को जानने के लिए, तो ये कुछ टूल्स हमने बताया आपको. अब आप बताइए कि कोई ऐसा टूल है इंटरेस्टिंग जो इसके अलावा हो. क्विजेस, ओके, गुड. एनीथिंग एल्स? गूगल फॉर्म, ओके. और कोई टूल? गूगल फ्लो, ओके, काहोot, चलिए.
इन सब के अलावा एक टूल आपको बताते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टूल। मैम के ही टॉपिक पे बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, कि हमको एक क्वेश्चनर बनाना है। हम एमसीक्यूज के थ्रू टेस्ट लेना चाहते हैं या फिल इन दी ब्लैंक्स या इसके थ्रू लेना चाहते हैं, लेकिन हमको बहुत आलस आ रहा है, हम करें क्या? हम नहीं बनाना चाहते, हम गूगल फॉर्म भी नहीं बनाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई एआई टूल है जो मेरा सारा काम कर दे? टेक्नोलॉजी है, आनंद के साथ हमें काम करना है, तो कैसे करेंगे? अगेन आते हैं फिर से उसमें हमारे नेक्स्ट एक लास्ट टूल बताते हैं, क्योंकि टाइम भाग रहा है, जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट नाउ असेसमेंट के लिए यू ऑल नो मेनी टूल्स, but now I will tell you one very interesting tool. The name of that tool is Conquer. Conquer AI. आपने यूज नहीं किया है तो आप यूज करिएगा इसको, Conquer फॉर AI पावर्ड क्विजेस। तो सबसे पहले लॉग इन कीजिए, लॉग इन थ्रू योर कंटिन्यू विद योर जीमेल। ठीक है, देखिए ये आपका इंटरफेस खुल गया उसका कॉन्कर। अब किस पे हमें बनाना है? हम उसी पे बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही। ये हमने यहाँ पे क्रिएट अ कॉन्कर क्विज। नाउ I'm going to make one quiz on central nervous system. I have written that topic, and then next, now see question type. What type of questions you want? Multiple choice, mixed, read and respond, fill in the blanks. चलिए सबसे पहले मल्टीपल चॉइस बनाते हैं एंड 10 क्वेश्चंस इट विल क्रिएट। ज्यादा चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे नहीं देना चाहते हैं तो 10 क्वेश्चन काफी हैं। फॉर whom you are going to develop this particular quiz? For higher education students in English, and then generate. Click on generate. डॉक्टर जोगिंदर सिंह प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। डॉक्टर जोगिंदर सिंह, थैंक यू। देखिए मीना मैम बताइए कैसे क्वेश्चन बने हैं? Excellent. It's so useful, ma'am. यूजफुल। और इसमें यू कैन डू करेक्शंस ऑल्सो, सपोज कोई गड़बड़ है कुछ है तो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गए। आप मीना मैम से हमने कहा मैडम इसको अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट करिए, सारे बच्चों को, जो बच्चे नहीं आते हैं आप इसको गूगल फॉर्म के थ्रू भेजिए। तो मैम क्या करेंगी? कॉपी पेस्ट करेंगी, गूगल फॉर्म बनाने का कोशिश करेंगी। लेकिन ये जो टूल हमने आपको बताया, यू डोंट नीड टू क्रिएट गूगल फॉर्म डायरेक्टली, यू कैन इंपोर्ट दिस इनटू गूगल फॉर्म। आप देखिए, क्लिक ऑन शेयर and you can create QR code also, and you can directly click on forms। ये क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, क्यों ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं, हमारे वो सब क्रेडिट इस हफ्ते के खत्म हो चुके हैं। बस आप फॉर्म में क्लिक करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट गूगल फॉर्म फॉर यू विद दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आप पहले चेक कर लीजिए क्वेश्चंस ठीक हैं कि नहीं है, कैसे हैं, और डायरेक्ट इसको बना दीजिए या QR कोड क्रिएट करके बच्चों को भेज दीजिए, वो कर देंगे गूगल फॉर्म में। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। एम्बेड करना चाहें तो आप अपने, अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में करना चाहें, यू कैन एम्बेड ऑल्सो लाइक दिस। डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहे तो यू कैन प्रिंट आंसर शीट ऑल्सो, क्वेश्चन शीट ऑल्सो। So easy for each and everything to do the assessment of your students. ठीक है, so this is also wonderful question। देखिए इसने आपको लास्ट में यहाँ पर और भी ऑप्शन दे दिए, not quite what you were looking for। देखिए आपको यहाँ पे
और भी ऑप्शंस दिए हैं कि आपको मजा ना आया हो तो यू कैन चूज अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेसमेंट पार्ट कि आप असेसमेंट कैसे करेंगे। मींस नाउ यू आर इन द फाइनल स्टेज कि यू हैव डेवलप्ड योर लेसन प्लान, यू हैव डन कोलैबोरेटिव वर्क। हमने प्री एक्टिविटी फेज किया कि हमने प्लानिंग कर ली, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ले सब कुछ कर लिया, इंटरैक्टिव कर लिया कि हमने क्लासरूम में कंटेंट की डिलीवरी की, एंड आफ्टर दैट टू गेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो अचीवमेंट था वो कि उसके लिए भी हमने एक टूल यूज कर लिया। ओके, अब यहाँ पे असेसमेंट हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं तो लास्ट में हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक ऑल्सो वी वांट। और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि दिस इज लाइक अ ई कंटेंट में हमने आपको बताया कि इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स ध्यान में रखते हैं। 4 क्वाड्रेंट ध्यान में क्यों रखते हैं, बिकॉज इन ई कंटेंट देयर आर 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज ई टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट मटेरियल बनाया, आफ्टर दैट यू हैव कन्वर्टेड दैट ई टेक्स्ट इनटू द self learning material, means you have used various formats of the presentation, video, audio, podcast, everything. And after that, whatever things, whatever content you are giving to your students, that is not sufficient. उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बता रहे हैं तो सिर्फ जो 1 घंटे का मटेरियल हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स, वैसे लिंक्स, ऐसे वीडियोस हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। तो हमारे लेसन प्लान या ई कंटेंट का एक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, वो क्या होता है, उसको कहते हैं हम सजेस्टेड रीडिंग्स या वेब रिसोर्सेज। उसको भी लिंक्स हम साथ में देते हैं, तब जाके हमारा जो डिजिटलाइज्ड लेसन प्लान है या ई कंटेंट है वो सक्सेसफुल बनता है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें क्या की, बना के उनको एक पूरी लिस्ट दे दी। और लास्ट ई कंटेंट का वो जो कंपोनेंट होता है दैट इज सेल्फ असेसमेंट, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लानिंग फॉर द असेसमेंट जो हमने पहले बताया आपको कि हाउ टू प्लान फॉर द असेसमेंट मीन्स हाउ टू अचीव whether my students were able to get the learning outcomes or not. इसके बाद जो लास्ट है उसमें हम आते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब कि हमने इतनी मेहनत की, इतने बढ़िया से चीजों को बताया और इतनी शिद्दत से हमने काम किया, लेकिन हमारी चीजों जो वो है तो ये रिफ्लेक्शन, ये फीडबैक, लेकिन फिर भी मान लीजिए हम पूरे दिन 3 घंटे हमने आपको पढ़ाया, अब हमने आपसे कहा कि आप हमको फीडबैक दीजिए कि मेरे पढ़ाने में, मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे उसमें कौन सी कमी थी। तो ये क्या है, दिस इज रिफ्लेक्शन कि यू आर क्रिटिकली, जिसको हम कहते हैं ना समालोचना करना, कि अच्छी चीजें भी बताना और साथ में जो हम नेगेटिव नहीं कहते, हम लोग कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं, हम लोग क्या कहते हैं कि जो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी वो चीजें भी बताना। वो उस तरह का फीडबैक लेना अपने पार्टिसिपेंट से, अपने स्टूडेंट से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें तो लगता है कि बिकॉज in general we talk most of the time we talk about the effective learning, that I have used presentation, I have used animated pictures, I have done this and that. But if learning is not effective, it means there is no use of that particular effective teaching. So we should focus on effective learning also. और effective learning कैसे की जाती है, जब तक कि आपके लर्निंग आउटकम्स 100% अचीव नहीं होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ये जो आप रिफ्लेक्शन वाला जो वो है, जो फीडबैक है, इसको जरूर से किसी ना किसी फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ना, कई बार हम रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस फॉर्मेट में कर देते हैं, कई बार हम समरी के फॉर्म में कर देते, कई बार किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू यूज
various types of these AI tools which we can use. इसके लिए बहुत सारे tools हैं और notebook LM आप लोगों ने जरूर से use किया ही होगा. I can see one ma'am, please brief about all the tools you discussed. Okay. ठीक है, एक बार हम आपको सारे टूल्स अभी फिर से नाम लिखवा देते हैं. अभी आते हैं रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक में. फॉर दैट ऑल्सो इफ आई वांट टू मेक वन summary of my whole lesson plan, what I will do, I can give these things in notebook LM. वो हमको एक बढ़िया सी समरी बना के दे देगा. या हम चैट जीपीटी में भी अब आपके पास ऐसे ऑप्शन होते हैं कि हम उसमें चैप्टर को इंक्लूड कर दें तो वो हमें बहुत बढ़िया से इंफोग्राफिक फॉर्मेट में हमारे चैप्टर की वो दे देता है, पूरा समरी दे देता है. ठीक है, चलिए अब एक बार दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन प्लानिंग विच आई हैव यूज्ड. और ये लास्ट का स्लाइड है जो आप सबको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया जो कुछ हम पढ़ा रहे थे. अब लास्ट में हम आपको कुछ चीजें एक बार पूरा रिवीजन करा देते. यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन यूज इट लेटर ऑल्सो व्हेनेवर यू वांट टू मेक योर AI बेस्ड लेसन प्लानिंग और ई कंटेंट. तो एक बार इसको मैम ने रिक्वेस्ट भी किया है, उस पे आते हैं. चलिए इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले. जस्ट अ मोमेंट. सबसे पहले हमने बताया था padlet.com. Padlet, PADLET, and that is very interesting tool. Padlet.com is very good for collaborative work. Suppose you want to do one competition among your students और आप उनके ग्रुप बना के उनको किसी स्लोगन राइटिंग में या पेंटिंग कंपटीशन में या घर बैठे कोई ऐसी एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो आप ऐसे ही पैडलेट में उनसे कोई भी तरह की पिक्चर्स ये वो सब कुछ उसमें ऐड करा के इसको कर सकते हैं. ठीक है, पैडलेट. इवन इफ यू आर डेवलपिंग एनी कोर्स और ई कंटेंट यू कैन यूज मैप पैडलेट. मैप पैडलेट मीन्स कि उसमें क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि वेयर आर यू ऑल फ्रॉम. हम हर स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बस उसमें बटन क्लिक करेंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि कौन उड़ीसा से है, कौन महाराष्ट्र से, कौन केरला से है, कौन उत्तर प्रदेश से है. हमको ये सब इवन प्लेस भी पता चल जाएंगी कि आप उस स्टेट के कौन से शहर से हैं. तो मैप पैडलेट दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन यूज विद योर स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट आई हैव यूज स्पिन व्हील. उसका भी मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया था. और इसके अलावा बल्कि आप ही हमें याद दिलाइए, हम तो भूल गए हैं, टूल्स यूज करते रहते हैं तो याद नहीं रहता है. आई हैव यूज चौकी.com. मैम स्पिन व्हील में हम लोग कैसे अपलोड करते हैं अपना फाइल? हाँ, कैसे करते हैं मैम, जब आप उसको क्लिक करेंगे जो हमने आपको लिंक भेजा था, जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कॉर्नर पे एक जगह पे लिखा हुआ है मेक योर ओन. ओके, ऐसे का है ना. उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपका एक सिंपल बेस आ जाएगा बनके. अच्छा अच्छा, फिर आप अपने कंटेंट है हम लोग उसमें अपलोड कर सकते हैं. हाँ, बस उसको कंटेंट कॉपी पेस्ट करेंगे. ऐसे ही कोई डिजाइन, जैसे आप मान लीजिए अपने किसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही बारे में एक कंपोनेंट को बताना चाहते हैं, आप उसकी कुछ डेफिनेशंस डाल दीजिए और फिर वो अपने आप ऐसा ही व्हील क्रिएट कर देगा आपके लिए. ठीक है, इसलिए हमने जो लिंक दिया है उसमें सारा है, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं. इसके अलावा हमने बताया था चौकी.com, suno.ai, कॉन्कर, lessonlab.ai. हाँ. Ma'am, second last slide, can you show once again? Where feedback, some link are there for the feedback. Okay. That was Edmodo, feedback के लिए and notebook LM. Notebook LM.
एंड इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट एंड योर कंटेंट ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा चीजें आपको इसलिए नहीं बताना चाहते थे, जितना बताएंगे उतना कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने सिर्फ एक एक टूल आपको बताया है। यू डू प्रैक्टिस, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, अपने उसमें एग्जीक्यूट करिए, दैट देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। लेकिन लास्ट में फिर से याद दिलाएंगे आपको कि कुछ भी यूज करिए, एथिकल इश्यूज को ध्यान रखिएगा। व्हेनेवर यू आर यूजिंग एआई टूल्स, हमेशा उसके एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इट इज रियली वेरी चैलेंजिंग टू यूज ऑल दीज एआई टूल्स। और फिर से लास्ट में 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे, अपनी बात को समाप्त करेंगे कि बड़ा अजीब सा फलसफा है इस एआई की दुनिया का, बड़ा अजीब सा फलसफा है इस एआई की दुनिया का, क्योंकि यहाँ पर तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसको यूज जरूर कीजिए, लेकिन बहुत संभल के, कि कभी ऐसी गलती ना हो कि हमारे एकेडमिक्स में हमारे लिए परेशानी हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आई एम शेयरिंग माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो विद यू ऑल। कभी कोई चीज की जरूरत पड़े तो आप वो कर सकते हैं। इवन आई हैव शेयर्ड यूट्यूब चैनल आल्सो, उसमें हमने ये सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे Good evening, ma'am. My name is Priyanka Yadav. I'm delivering the vote of thanks on behalf of the organization. Respected Dr. Kiran Lata Dangwal, ma'am, and organizer and dear participant. It is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of everyone present over here. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Kiran Lata Dangwal, ma'am, for delivering such an insightful session on AI in lesson planning and collaborative learning environments in education. Ma'am, your vast experience of over 27 years, remarkable academic contributions through research publications, books, MOOCs, and educational resource recognized by NCERT and UNESCO are truly inspiring. Your valuable insights on the role of ICT in transforming education have enriched our knowledge and motivated us to embrace technology in teaching and learning. We are grateful for your time, expertise, and guidance. We thank the organizers, faculty members, and participants for the wonderful session and successful session. So I'm presenting one poem because आपने भी 2-3 पोयम हमें सुनाए हैं, तो हम थोड़े आपके लिए पोयम सुना रहे विद द हेल्प ऑफ एआई मैम। मैं ये भी कंक्लूड कर रही हूँ। डॉक्टर किरण लता डंगवाल मैम के लिए धन्यवाद कविता, आईसीटी इन एजुकेशन सत्र हेतु। आदरणीय डॉक्टर किरण लता डंगवाल मैम ज्ञान की ज्योति लेकर आई, आईसीटी के राह में हमें दिखलाई, शिक्षा में तकनीक का महत्व बताया, हर विषय को सरल और रोचक बनाना सिखाया। अनुभव की गंगा बहती है आप में, शोध और नवाचार रहते हैं आपके साथ। 27 वर्षों की आपकी साधना हम सबके लिए है प्रेरणा। ई कंटेंट, मूक्स एंड ओईआर का ज्ञान आपने बढ़ाया हमारा सम्मान। नई शिक्षा की नई उड़ान आपके मार्गदर्शन से हुआ आसान। शिक्षक कैसे बने समय के संग, कैसे अपनाए तकनीक के रंग, इन सब बातों का सुंदर सार दिया आपने आज अपार। आपके शब्दों की यह सौगात रहेगी हम सबके मन में साथ। हृदय से करते हैं हाँ अभिनंदन, स्वीकार करें हमारा विनम्र वंदन। धन्यवाद। इन पुष्पों को स्वीकार कीजिए, अपने स्नेह और आशीष से हमें अनुग्रहित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, समस्त आयोजक मंडल एवं प्रतिभागियों की ओर से। Once again, thank you, Dr. Kiran Lata Dangwal, ma'am, for inspiring address. Thank you, ma'am. जय हिंद। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। और आपने तो एआई टूल का तुरंत यूज किया, दैट इज वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और आप लोगों के
जो चैट में हम वो मैसेज देख रहे हैं, डॉक्टर हितेश का मैसेज पढ़ के बहुत ही मजा आया कि मजा आ गया, सुपर डुपर सेशन। थैंक यू सो मच हितेश जी, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर अप्रिसिएशन। फिर मिलेंगे टू बी कंटिन्यूड जब अवसर होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार सबको। जरूर मैम, धन्यवाद, थैंक यू मैम। Bengal ma'am, thank you so much for your wonderful. Thank you, ma'am. And we hope इस तरह से आपके ज्ञान से हम और हमारे प्रतिभागी जो है वो लाभान्वित। Thank you so much ma'am. Thank you so much sir, thank you, thank you. Thank you ma'am. Okay, participants. If you so for day we are done with the day, so we can wind the meeting for now. And tomorrow exactly at 10 o'clock we are going to have our session. The responsibility for tomorrow for introduction and vote of thanks will be shared on the WhatsApp group, as well as the time as well as the new link for the for tomorrow is also will be shared. And tomorrow on the last session, that is 3:30 to 5, we have kept it specifically for discussion of your assignment and any problem which if you have any problem in using any tool, we have dedicated 1.5 hour for that. An entire session is dedicated for that. So we are going to discuss that tomorrow in 3:30 to 5. So please be available over there, so that we can discuss our assignment also. And also, if you have any queries regarding the usage of any tool, we are going to discuss that also. I hope it is clear to everyone. Okay, thank you so much everyone for joining us. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. sir. Thank you so much everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.